लाइव स्ट्रीम ऑफ KCD 2 एंड ये आज मेरी लाइफ की लास्ट स्ट्रीम होने वाली है KCD की। आज के बाद मेरा KCD समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। नो मोर किंगडम कम डिलीवरेंस स्ट्रीम्स फ्रॉम नाउ। एक जर्नी का अंत। आई विल मिस दिस जर्नी मैन, आई विल मिस दिस जर्नी। आज ये गेम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग भाइयों। एंड वेलकम एवरीवन टू KCD 2। राम राम गौरव भाई, राम राम, क्या हाल है आपके? वेलकम टू द स्ट्रीम गौरव भाई। फाइनली आज लास्ट स्ट्रीम है मेरी। देखते हैं कितनी लंबी जाएगी, लेकिन आज कंप्लीट है ये गेम। आई विल मिस दिस गेम मैन, आई विल मिस दिस गेम। बहुत याद आएगी इस गेम की मुझे। What a masterpiece experience this game was भाई। फीवर, कफ, कोल्ड, गला खराब, ऐसा क्या खा लिया भाई? ऐसा क्या खा लिया गौरव भाई? एकदम से सब गड़बड़। कोई ना भाई, गेट वेल सून। What do you want? I'm investigating the source of that illness that's been spreading around here. And I could use your learned knowledge. I'm listening. I came across the symbol of the Kingdom of Jerusalem during my investigation. बर्थडे के दिन आइसक्रीम खाया, केक खाया, तो फिर उसके बाद ही हर रोज बारिश में भीग रहा हूँ। अरे भाई, तब तो होना ही था। And I was wondering if you might have any records or anything that might be connected to it. If memory serves, something should definitely be here. I even dabbled in it myself long ago. We have the legacy तो अभी of a ऑफिस नहीं knight जा रहे named मतलब फिर? Boleslav Bavor, who journeyed through the Holy Land and visited Jerusalem. There was some connection to the monastery crypt, if I recall. Really? Because I actually came across it in the crypt. What? What are you talking about? Well, I ran into some labourers down there. From what I gathered, they were trying to rob some of the graves. And they were looking for something tied to the Jerusalem cross. By Christ, they were after the relic. What are you talking about? What relic? There's a possibility that आइसक्रीम तो खाते हुए टाइम हो गया। हेलो रिक भाई, वेलकम। ऑलमोस्ट 2 वीक बाद आज ज़्यादा हालत ख़राब है और धीमे धीमे इफेक्ट पड़ गया। That's what got me interested. बारीक आज लास्ट स्ट्रीम है इस गेम की। What exactly did you discover about them? Not much. That's why I soon gave it up. Aside from the travel records of Sir Bavor, there wasn't any further mention of anything that might be connected. In the end, I concluded that the whole tale of the relic was likely just Bavor's own fabrication. That's a shame. It was just starting to get interesting. Still, I'd very much like to have a look at the travel records, just in case. I'd be glad to show them to you, to examine. But first, we must report those vile thieves to the abbot. You're right. The abbot ought to be told, but it's probably not wise to burden him with it. Last time I had like 1-3 at once. I'm not gonna lie, I was okay. इसका फिनाले बहुत पीक है, देखते हैं यार कैसा है। ऊपर से संडे को पिज्जा गोलगप्पे पेल के आया मार्केट जाके। अरे वाह, फेवरेट खाना मेरा। We need to deal with the illness. Once things have settled down, we can make sure those thieves get what they deserve. Besides, we've got almost no proof yet. If I manage to investigate the matter of Bavor more thoroughly, I might stumble on something. Still, it's a serious thing. We mustn't wait too long. Of course.
Once I've gathered the evidence, I'll explain everything to the abbot straight away. And now I'd like to take a proper look at Bavor's travel records. Of course. Give me a few moments. I'll find them for you. And I believe Bavor's name also appeared in some old accounts. I'll try to track those down too. Here you go. Bavor's travel records about his journey through the Holy Land. And I've also found these old accounts. Feel free to study them too. I'm myself what conclusion you'll come to, if any. It really says here that he acquired a holy relic. Let's see how it continues. भाई ये बुक में क्या लिखा है तुमको अगर याद हो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरे को साला ऐसा पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है गेम में बुक बड़ा अजीब सी वो राइटिंग है ना इसकी ये थोड़ी अजीब टाइप की इंग्लिश है ये A tale of how I came by holy relic earned through my glorious deeds some of the good of all Christians and of the injustice some of shown to me of the fleeting riches of this world and of the eternal grace of our Lord Jesus Christ. From Bohemia to lands of the Italians. In the year of our Lord 1300, I set forth from Bohemia on a perilous journey that I might perform great deeds and so raise my name in the eyes of the king. The first I passed through the border forest, then along with the imperial route through the Alpine mountains, which are most fair, until I reached the city of the Italians that stands upon the water, so is called Venice. मैं भी कहाँ पढ़ता हूँ बहुत दिक्कत आती है इसमें वही अरे बात है ना बात है कि थोड़ा क्या पता जरूरी हो कुछ डायलॉग के लिए इसलिए There I found a swine ship so set out upon the sea. वैसे जरूरत है नहीं मैं AI ओवरव्यू से भी पूछ सकता हूँ कि इस बुक में क्या लिखा है वो ज़्यादा इजी एक्सप्लेन कर लेगा मैं तो भाई बुक वाले जितने मिशन होते हैं AI से ही पूछ लेता हूँ बुक में क्या लिखा था क्या ऑप्शन सही है Sailing the sea is a curious experience, especially when nothing is to be seen on the horizon but water alone. They sailed for a long time along the creek coast and among its many islands and more than had to defend our ships against pirates. Once I was cast overboard and thought seas yet all were astonished when I returned, for I am strong swimmer. At last we reached the port of क्या लिखा है ये जाफा आई थिंक हाँ जाफा which fled far from Jerusalem. क्या पता है मैं बोल के क्यों रीड कर रहा हूँ क्योंकि मैं साइलेंट रीड करता हूँ मुझे समझ नहीं आता बोल के मेरे दिमाग में याद रहता है मुझे कि क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा याद रहता है एटलीस्ट टेक्निक होती है कुछ शायद There I found Christians through few in number. I must note here that the city was not destroyed or taken by अबे क्या है यार अबे यार तुम लोगों की इंग्लिश भी नॉर्मल होती अच्छा रहता टाटार्स लिखा है शायद ना ये क्या लिखा है as is often said भट्टे में रूल बाय अबे यार मैं नहीं पढ़ा आज तेरी ऐसी की तैसी इतनी बड़ी बुक मैं नहीं पढ़ रहा Oh, then thus fortuna you are. Welcome to the stream, Mr. Parasite. That sounds pretty clear. Let's see what the accounts say. भाई चलो हेनरी ने ब्रीज तो दे दिया According to General Beaver had buried here. So Bavor gave the monastery a generous donation and paid for a chapel mural painting. And still, despite all the records and mentions,
Crispin had his doubts. Why? Well, are you still so enamored with I read the journal. कौन पढ़ता है इतना, स्कूल में नहीं इतना पढ़ा। यस यस, कॉलेज जाने का सोच के मेरी रूह कांप रही है। क्यों गेम कैज़म? A lovely tale. उसकी हालत खत्म है। Really brought the Holy Land to life. And it says the relic Bavor acquired was a splinter from the true cross of Christ. Holy Virgin! Such a sacred treasure! And according to the book, Sir Boleslav was to be buried with the relic in the monastery crypt. So it says in the book. I also found my old notes and remembered how it all went back then. I too searched for Bavor's grave. I even dared venture into the crypt, but despite all my efforts, I never found it. How is that even possible? A grave can't just... चलो गहरी गहरी बातें करें। यस यस, बोलो बोलो, मेरा घी खत्म है। होली वर्जिन। Quite frankly, I don't know. And I didn't know. मेरी हेयरलाइन इस बंदे जैसी होगी कुछ साल में। Then either. Once I was convinced none of the graves belonged to Bavor, I laid the matter before the abbot, but not our father Jan. This was over 20 years ago when Abbot Vitus held office. May the Lord grant him eternal peace. Together we came to the conclusion that Bavor's tale was likely at least partly, perhaps entirely, made up. Why would it be made up? Surely Sir Boleslav wouldn't lie about something so serious. The book's one thing, but there's not a single other mention anywhere. The grave's missing, the relic's nowhere to be found. Can you think of another explanation, then? Bavor mentions in his journal that he received a great fortune from the King of Cyprus, and the account records say he gave a generous donation to the monastery. Do you think that was made up too? They confirm at best that Bavor had wealth, not where it came from. According to the late Abbot Vitus, he might have gained that fortune by plundering or as spoils of war, and the tale of the Holy Land was just a cover to mask the dishonorable origin of his riches. I've never been to the Holy Land, but I've seen plenty of wrongdoings, even here in Bohemia. And if Bavor really wanted to cover up how he got his coin, he could have built a village, built a fortress, or who knows, bought up a mine. He could have done any number of smarter things than spinning a tale about a heroic journey halfway across the world. Don't you think? I'm no expert in fraud, but yes, he chose a rather complicated cover-up if that's what it was. Why would Bavor do that? कॉलेज में जरूर चिल्ला के भाग जाओ और एक पत्थर के कागज में लपेट के उसको कलर ग्रेनेड जैसा देना, फिर जो होगा वो बाकी लोग देखें। वैसे मैं सोच रहा था, बताओ, परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, समझ रहे हो गेम कैज़म? तब समझ रहा है वो। What would he gain by deceiving everyone here? If memory serves, he had some disputes over property. Maybe he wanted to improve his reputation. That's mentioned in the text, but lies wouldn't have helped him. Quite the opposite if he'd been found out. You'd be surprised how short-sighted some folk can be. But I agree, something about it doesn't sit right. And what about the mural mentioned in the accounts? Does it really exist? Yes, it's in one of the chapel naves. It depicts several scenes from Bavor's alleged adventures. Well, then that proves Bavor's story wasn't just made up. Surely the abbot back then wouldn't have approved such a mural in the main church if he hadn't believed it was true. If the former abbot believed Bavor wasn't a liar, but a real hero of the Holy Land... ओके, चलो गुड नाइट रहेगा। यूर ओके, ठीक है भाई, गुड नाइट भाई, सो जाओ आराम से, टेक रेस्ट। आज से सालों पहले वाईटी वर्सेस टिकटॉक को लेकर जंग छिड़ गए थे और टुडे इन रेट्रोस्पेक्टिव इट वाज सो पॉइंटलेस। भाई तो सोशल मीडिया पे सब कुछ पॉइंटलेस ही होता है। गेम कंप्लीट कर लिया हेनरी? हाँ, मैंने मेन गेम कर दिया है, बस लास्ट डीएलसी खेल रहा हूँ। जो लास्ट डीएलसी है ना, वो मिस्टीरिया वाला मोनेस्ट्री का, और आज वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हो चुका मेरा कंप्लीट गेम। I'll believe him too.
All the more Welcome, reason I want to Wendy, see bhai. it for myself. No harm in trying. At the very least, it's a fine piece of work. The crypt has a hidden side chamber, you know. Excuse me? What chamber? It had been walled up. In one part of the crypt, the masonry was loose. So I managed to get inside. I've never heard of anything like that. Perhaps even Abbot Vitus didn't know of it. I'd say the abbot would definitely have known about something like that. He just didn't tell you. Maybe on purpose. Where are you going with this? I'm not sure. Just thinking out loud, really. The account books mention that Bavor had a sarcophagus made at his own expense. That's possible. Does it mean anything? If he paid for it himself, there had to be a reason. Masonry work like that is no small matter. And it's odd, isn't it? He sorted it all out in detail with the monastery to have his tomb here. Then he wasn't even buried here. बेटा ले आओ क्या बैटमैन? अरे ले आओ भाई, कोई रोक थोड़ी रहा है। इसके बाद कौन सा गेम खेलना है देखता हूँ यार। विचर 3 में भी मैं कंटिन्यू करूंगा, उसमें बचा हुआ साइड कंटेंट, बाकी गेम तो वो भी कंप्लीटेड है पूरा। वेल भाई, जो लोग उस समय शॉर्ट फॉर्म के खिलाफ थे आज उनको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो तो है यार। Right. I never made that connection before. And then there's the relic. If Bavor had just wanted to raise his reputation with a good story, why claim to have gained something so rare? Perhaps out of vanity? There's no shortage of that among the nobility. But his tale's already heroic enough without it. Making up a relic would only draw unwanted attention. That's a good point. It'd be too risky. Don't you think this whole thing is a bit too complicated? Every explanation for why Bavor would lie seems more convoluted than just acknowledging it's true. Listening to you now, it's like hearing my younger self. And I sound exactly like Abbot Vitus. His view was that Bavor's story was fiction. He told me I'd be better off letting it go. What exactly did he say? That I should stop chasing old crusaders and focus on real, meaningful work. Why didn't you stand your ground? I couldn't argue with the abbot. What he said went. And I was just a lowly monk, barely past my vows. I had to obey. In time, I learned to let some things lie. Those who dig too deep may uncover what they'd rather not. I'm not blaming you. सबसे ज़्यादा नहीं बट रिस्पेक्टेबल अमाउंट में यूज़ करते भाई। याकुजा सीरीज करो ना, वो मेरे को नहीं इंटरेस्टिंग लगती। But I think it's time we reopened that old inquiry of yours and saw it through. And maybe we'll finally unravel Bavor's mystery together. If that relic really does exist, and it surfaced now, it'd surely be a sign from the Lord, a sign of hope in these desperate times. Don't get ahead of yourself. We've not even found Bavor's tomb. Without it, we're stuck. But you spoke of that hidden chamber in the crypt. If there's any clue, it'll be in there. Take this and study it closely. It's a drawing of Bavor's family coat of arms I came across years ago. According to this, you'll know if it's truly the grave of Sir Boleslav. Yes, the mural in the chapel, paid for by Bavor himself, also bears his coat of arms. Those workers, if they really were after Bavor, they only had a drawing of the Jerusalem cross. But if he was buried under his family crest, no wonder they opened the wrong graves. Yes, that could be it. Study that sketch well, so you won't make the same mistake. Thank you. I'll head off at once. Just be careful, please. You know the abbot's orders, the disease, or this misfortune. Don't worry. I'll be careful. And in the crypt, show respect to the eternal rest of those buried there, especially now, with death haunting the monastery. आ गया। मुझे याद है उस समय सेकंड पॉइंट ऑफ द डिबेट और शॉर्ट फॉर्म में बहुत क्रिंज कंटेंट होता है। वेल दैट इज वर थिंग, शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा क्रिंज कंटेंट इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग लॉन्ग फॉर्म में क्रिंज कंटेंट नहीं कर सकते, ऐसा किया जा सकता। हाँ है, इनफैक्ट मूवीज क्रिंज से भरे हुए हैं, वीडियोस तो हो ही सकते हैं। हाँ सही कहे। आज मैंने हिटमैन पार्ट 1 स्पीड रन किया फुल गेम, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। बस तुमने स्पीड रन किया और टाइम भी लग गया, ये कैसे हो सकता है?
heard some... I must be mad. 60 minutes is all I need. 60 minutes are all I can spare to play with you. कितनी अजीब बात है ना, अजीब तो है। शॉर्ट फॉर्म में क्रिंज कंटेंट ज़्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज पीपल डोंट वांट 40-50 सेकंड ऑफ क्रिंज, बट लॉन्ग फॉर्म में लोगों को क्रिंज देखेंगे ही नहीं। वो भी बात है, सही कहे भाई। टॉक्सिक कंटेंट भाई कोई बंदा लॉन्ग फॉर्म नहीं देखने वाला भाई। 10-15 मिनट मतलब 20-25-30 मिनट का लोग देखेंगे ही तो शॉर्ट शॉर्ट 50 सेकंड का देखेंगे और रेज वेट हो जाएंगे भाई। सेम क्रिंज के साथ है। अगर ये बात है तो मिस्टर सर तुम यहाँ लाइव क्रिंज क्यों कर देख रहे? इसको देखो बेटा छपरी। कभी कभी जो हमें लगता है दैट्स नॉट ऑलवेज द ट्रूथ। 60 मिनट फिर फुल गेम प्ले टुक मी भाई। 60 मिनट्स में तो मैं से इधर उधर घूमता हूँ हिटमैन में। और गांडू ने देख लिया। बट ट्रुथ इज एवरीथिंग इज फॉल्स। ये देखो इसे बैटमैन का थंबनेल देख लोगे तो कहोगे कि ये मैंने बनाया नहीं, बिकॉज जब मेरे सॉफ्टवेयर ख़त्म हुए थे तब से अब मैं फ्री वाली चीज़ें चला रहा हूँ और फ्री वाली चीज़ों में लौड़ा दम नहीं है। और माँ की चूत AI की माँ की चूत इन्फिनिटी। अरे AI तो झाटू है यार। जैसे ही कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर तुम गरीब को पैसे बताओगे फ्री में तो वो कामचोर और आलसी बन जाएगा भाई। और कम कर सकता है मैं टाइम। पहली बार फुल रन मारी है और कम कर सकता मैं टाइम। पहली बार फुल रन मारी है। वैसे आज एक बड़ा कांड करा हमने स्कूल में क्या। बट लोग ये बोलते कि अक्सर उनको खुद मुफ्त में बहुत सारी संपत्ति मिली हुई है। The start of Bavor's journey. That's probably Venice and Jerusalem. King of Cyprus, Knight Bavor, and his relic. Though that shield looks a bit different than the one in Crispin's sketch. Almost the same. Only on the mural, it's got that inner scutcheon added. They gave a lot of space to Bavor's crest and his elephant. ओके कांड तो स्कूल में हमने बहुत किए। यस नहीं समझे क्या नहीं समझा? अरे यार गेम इतना इंटरेस्टिंग है ना कि ये थोड़ा ये वाली बातें कम समझ आ रही हैं अभी। गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस वक्त।
didn't you hear? It seems I've got a bit lost. Just take me away. Come on, then. Be more careful next time. भाई अरेंजमेंट पीरियड और पूरी क्लास में ग्राउंड में सब्स्टिट्यूट पूरे स्कूल में मैं क्लास में ढूंढ भाई अरेंजमेंट पीरियड था और पूरी क्लास में ग्राउंड में सब्स्टिट्यूट पूरे स्कूल में क्लास ढूंढ रही। फाइनली उसको हम सारे ग्राउंड में मिल गए। फिर वो सबको क्लास में लाई और वो वहाँ कर लेक्चर वगैरह दिया। क्या लेक्चर दिया? What? I must be mad. Huh? Did I imagine it? We were under quarantine, didn't you hear? What's it gonna be? I'm going. Well, what'll it be? Hear me? वाह बहन चो नीचे है। सर्दियों की बात थी। लंच के टाइम धूप बढ़िया निकली थी। हमने क्लास की खिड़की से साइड में घर दिखते थे तो एक आंटी सर पे तेल लगाए थे। मैंने देखकर बोला, दूसरे ने चारों को बात बताई। बोला कि क्लास सस्पेंड करवा दूंगी। उसने पनिशमेंट में क्लास को के बाहर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट टीचर आई फॉर नेक्स्ट पीरियड। हमने उसको बोला क्लास को ग्राउंड लेकर जाओ प्लीज़। वो सही में पूरी क्लास को ग्राउंड में लेकर चली गई। फिर पूरा दिन मैं ग्राउंड में रहा। उसके बाद कोई ना गेम की बात करता है। आपने नोटिस किया होगा कि नोबल्स की लाइफ वैल्यू इज मच मोर। भाई इस चीज़ को तो मैं जान गया हूँ केसीडी में। भाई ये चीज़ तो केसीडी खेल के मैं जान गया हूँ नोबल्स के बारे में। नोबल्स क्या अनफेयर एडवांटेज है। नोबल्स का तो ऐसा है ना कि अगर तुमने नोबल्स को हाथ भी लगा दिया ना तो वो डेथ सेंटेंस है पुराने ज़माने में। बात तो का मतलब बिगड़ गया। सबको लगा आंटी अपने वहाँ तेल लगा रही हैं। एक कमेंटेटर टाइप दोस्त आया, चिल्ला के बोला आंटी मैं तेल लगा लिया। और आंटी ने सुन लिया बस डीसी। अरे बाप रे भाई, कॉर्पोरेट फीस कॉर्पोरेट पार्टी पॉलिसी। भाई उसने लिखा भी इस तरह है ना, पता नहीं चलेगा। कॉर्पोरेट गेमर इज नॉट कॉर्पोरेटिंग विद वाईटी पॉलिसी मैन। What? Huh? Who's there? Huh? Did I imagine it? Hey, what are you wandering around here for? What's it gonna be? I'm losing my patience. Ow! Yeah, fine. I'll make you surrender. What's that? Ha! नीचे नहीं जाना, समझ गया भाई। तुम्हारी तो गेम खत्म हो गई थी ना। मेन गेम हुई है अभी, ये डीएलसी बस बच रही, आज ही हो जाएगी। अक्सर केसीडी के नोबल्स को जिंदा रखते हैं टू टेक रैंसम। हाँ, और रैंसम की बात नहीं है भाई, मतलब उनका स्टेटस ही इतना हाई है ना। वो गलत काम करके भी निकल जाए, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। कॉमनर को तो हर चीज़ के लिए पेल देंगे भाई। उसने अगर कुछ हल्का बहुत भी कर दिया।
आंटी का बेटा क्लास में आ गया और आंटी ने बताया कि इस क्लास में वो बच्चे हमें बोल दिया सर हमारी क्लास में कि हो ही नहीं सकते बच्चे बिकॉज लंच में साइड वाली क्लास के बच्चे हमारी क्लास में धूप खाने जाते हैं। बच गए। which makes sense if a bandit has them, but if a noble kidnaps another noble like hands keep on it makes little sense। हाँ सब बात तो सही है, दो नोबल्स के बीच अगर फाइट हो रही तो फिर सेम स्टेटस के हैं। बस फिर क्या साइड वाले क्लास के साइड लड़की की क्लास लगा दी बिना वजह और फिर उसके बाद जब स्कूल खत्म हुआ उसकी क्लास हमारी क्लास में लड़कों का भयंकर लड़ाई हो गई। अरे भाई किसने किसको मारा कितने लोग जिंदा बचे ये भी बता देना। गुड नाइट भाई। मैं क्लास में जिसको बोला था व्हाट्सएप पे सब पेरेंट्स का बच्चों का कांड बताना, उसने नाम वाली पर्ची पटकर डस्टबिन में फेंक दी। वाह भाई चैड है भाई वो बंदा चैड है, असली चैड है वो बंदा। उसको सल्यूट रहेगा मेरी तरफ से। गुड नाइट रहेगा, ठीक है भाई, गुड नाइट। Huh? I must be mad. What's that? Hey, get out of here! My turn to hack. It's a wonder you're still standing. Now you're gonna die. नॉट फीलिंग वेल। हाँ मुझे पता है, डाय देम। ये छपरी है भाई एक नंबर का। अरे मादर से कहाँ फेंक रहा है? Did I imagine it? Ow! Curva! We're under quarantine, didn't you hear? एजेंट 47 भेजूं गुमराह के घर पे? भाई मेरे घर पे भेज के करोगे क्या? मैंने क्या किसका क्या बिगाड़ा है? मेरी मौत से भाई लोगों का फायदा हो ना हो, नुकसान जरूर होगा। बहुत लोग एक अच्छा स्ट्रीमर खो देंगे, बहुत लोग एक अच्छा दोस्त खो देंगे। What's that? Did I imagine it? You aren't supposed to be here. Are you really gonna make me look for you? Are you alright? What happened? Wake up, come on. Fuck. Did someone knock me out? Who did? एड्रेस मैंने सेव करके रखा था, गूगल से पिन कर रखा है। भाई बाकी सब तो ठीक है। ये अच्छा स्ट्रीमर कौन है लेकिन? अबे यार दे दिया।
अच्छा स्ट्रीमर मैं हूँ भाई, जिसने केसरी की सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीम की है इंडिया में। भाई मेरे को अगर टॉम मैकाई और ल्यूक डेल मिल गए ना रियल लाइफ में, मैं उनको गले लगा लूंगा। We were under quarantine, didn't you hear? I was just leaving. Well, what'll it be? Hear me? I'm going. Well, what'll it be? Hear me? I've lost my patience. Surrender and I'll take you to the abbot. You aren't supposed to be here. I'll fight. You won't surrender. Hands up. भाई तुम्हारी फीड में आजकल रवि किशन नहीं आ रहा क्या? भाई मेरी फीड में कभी नहीं आता, मेरी वो ऑफ है भाई, सर्च हिस्ट्री वगैरह और वो वॉच हिस्ट्री वगैरह। पैसा या पहचान, अजीब वर्ड रिकॉर्ड है। मैं भी काले सबसे ज्यादा हिटमैन स्ट्रीम में, मैंने भी काले सबसे ज्यादा हिटमैन स्ट्रीम इन इंडिया। भाई एक चीज बताओ, पूछो, मतलब पूछो, मैं बताता। What's that? मैं स्टार्स देख रहा था और वो यार उसमें वीडियो पर 740 व्यूज थे, एनालिटिक्स में 808 दिखा रहा था, लेकिन मैंने फिर 2 आवर्स बाद चेक किया तो वीडियो पर 770 एनालिटिक्स 780। ये आईटी का चक्कर रहता है स्टैक। मैं समझ गया भाई, मेरे साथ भी हुआ था। तो बस तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने 3 साल पहले एक वीडियो डाली थी, तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड की ना, तो 1 घंटे के अंदर उस पर पता है कितने व्यूज थे? 200 व्यूज। और फिर मैंने अगले दिन जब उठ के देखा तो 200 से 100 हो गए। मेरे 2 दोस्तों ने मुझे एक चीज बोली कि भाई मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे लगा कि तुम्हारी वीडियो पे 200 व्यूज आए थे, लेकिन फिर मैंने देखा बाद में 100 थे। मैंने कहा तुम्हारी आंखें खराब नहीं हुई, वाईटी के कुछ ग्लिच था ये। I suppose it was nothing. Huh. Strange. You aren't supposed to be here. Stop messing around. You should have yielded.
भाई सेम भाई, वो ग्लिच है वाईटी का भाई, वाईटी एकदम एक्यूरेट नहीं होता भाई। मेरे 2 बार ही हो चुका है, परसों भी सेम, तब 600 वीडियो मतलब वीडियो पे 600 थे, एनालिटिक्स में 740, बाद में 630 एनालिटिक में, एनालिटिक में वीडियो में, बाद में 730 वीडियो में, एनालिटिक में 690 भाई। वो भाई दिक्कत है वो वाईटी की अपनी, तुमको पता है ना वाईटी में बॉट वॉचिंग भी एग्जिस्ट करती ही है। Ow! Hey, get out of here! अरे बैन चो, उसके मुंह पे ही मार दिया पागल। Holy relics hidden in barrels of olives. Just like he wrote in his travel records. And the attack by Mamluk bandits. No doubt Bavor had courage aplenty. You aren't supposed to be here. I was just leaving. Well, what'll it be? Hear me? I'm losing my patience. You raise your hand to me? I'm winded. I'll whip your ass so much you'll be looking forward to the game. अब मेरे को कौन व्यू वॉट दे रहा, अभी चेक करता जा रहा। करेंटली चैनल पर 789 और वीडियो पर 780 एनालिटिक्स तो मैंने अभी चेक ही नहीं करे, करके देखो एक बार। Holy relics hidden in barrels of olives. Just like he wrote in his travel records. And the attack by Mamluk bandits. No doubt Bavor had courage aplenty. What? I must be mad. Huh? What? Did I imagine it? बीसी पहली बार तो किसी वीडियो पे इतने हजार वाटी बकचोदी कर रहा, मोबाइल पर हूँ, आप डाउनलोड करना। अरे उसकी जरूरत नहीं, वो वेबसाइट से हो जाएगा। Eh? I must be mad. Abbot Vitus.
Crispin mentioned him. Let's hope he forgives us for digging into Bavor's story again. A crozier and mitre. That'll be an abbot's tomb. Abbot Uldericus. No sign of Bavor. This must have been some knight. There's a cross above his head, but a rose in the crest. And I'm looking for an arrow. Some past abbot's tomb. Maybe even Heinrich. Nice. Oh. Good thing I've got the hood. Sarcophagus of a nobleman. Disturbed by those workers. Most likely because of the large cross. Bavor ought to be buried under an arrow crest. Looks more like an abbot's tomb from the carving. Good thing. I'll be shifting that rubble for days on my own. What's that? To hell with it. What? Fuck it. To hell with it. Eh? I must be mad. What? Okay, it's 800 analytics. मेरी ऑडियंस इस 40% यूएसए, सो ओवर नाइट और बढ़ेंगे. हाँ, तुम्हारा वीडियो नो कमेंट्री है ना, तो तुम्हारी ऑडियंस मतलब इंडियन तक नहीं रहेगी. Let's hope he forgives us for digging into Bavor's story again. A crozier and mitre. That'll be an abbot's tomb. This must have been some knight. There's a cross above his head, but a rose in the crest. And I'm looking for an arrow. Abbot Uldericus. But no sign of Bavor. Oh. Good thing I've got the hood. Some past abbot's tomb. Maybe even Heinrich. Nice. इंडियन तो साले बड़े भैया, मुझे फ्री फायर खेलना है, करेंगे. फ्री फायर. Looks more like an abbot's tomb from the carving. Good thing. I'll be shifting that rubble for days on my own. This one's rather worn down. I think I can make out the abbot's symbol.
Bavor's crest. So it's true. What? That's not Bavor. I need to tell Crispin. Bloody hell. God have mercy on your soul. This actually a song like original song, not me joking around. भाई फ्री फायर के गाने कौन सुनता है? इन्हें किसने मार दिया? मैंने नहीं मारा भाई इन्हें। ये कैसे मर गए? अच्छा प्लेग व्लेग से मारे होंगे आई थिंक ये लोग भी। इंडियन तो साले बड़े भैया। मुझे फ्री फायर अरे तो पढ़ लिया। Single record. Brother Crispin. Anyways, Henry, बोलो। I searched through the archives again to see if I might still find something on. ये गांडू ये कनेक्ट हो गया ना गलत वाला। हाँ ये चूतिया कनेक्ट हुआ है। रुको पहले सही वाला कनेक्ट करो। वेट अ सेकंड ब्रदर। आज एक बहुत हेवनली सुन लिया नाम सॉन्ग सुन लिया। कौन सा? But so far nothing. And your search in the crypt? Did you dare go down there? I dared. And more than that, I truly did find Bavor's sarcophagus in the hidden chamber. By all the saints. And the relic? Was it there? No. I was hoping, but I don't think it's that simple. There's a sarcophagus with Bavor's crest, but Bavor isn't the one lying in it. What? You? I had to know. Judging by the robes, I'd say it's an abbot or some other high-ranking cleric. Good lord, that's truly strange. And do you know what's even stranger? I think someone was watching me down there. Watching? Who? Did you see anyone? I just heard voices. Could it have been one of the workers again? I'd say it was someone else. Does anyone else even know about this Bavor mystery? As far as I know, no one. I only ever told Abbot Vitus, and I haven't spoken of it to anyone since, I swear. There's not much we can do about it now anyway. Best thing is to solve this mystery about Bavor as soon as we can. So, you're saying you found a sarcophagus with Bavor's crest, but not Bavor himself? Exactly.
I have no idea what to do next. I was kind of hoping you might come up with an explanation. रुको पढ़ूंगा अभी तुम्हारा ये पहले That की बातें chamber सुन लूं. looked untouched for years. Explanations do come to mind, but they're purely speculation. It's possible Bavor was never buried here at all. Or perhaps his grave was moved. Another thought just occurred to me. What if Abbot Vitus was the first to go looking for Bavor? He found him, maybe even took the relic, and then tried to cover it all up. But why would an abbot do such a thing? I don't know. I'm only thinking aloud. But you must admit, it can't be ruled out. Perhaps not. But before jumping to conclusions, let's examine the other possibilities. It's quite possible the remains were moved, and that's why Abbot Vitus shut down my investigation. It is a sensitive matter, after all. So where could they have moved Bavor to? Most likely to the consecrated field next to the monastery, or the graveyard by the infirmary church of St. Cosmas and Damian. Someday we gonna get set it off. Someday we gonna get it off, baby. Don't you think you be get it off on a pack of fentanyl? You might think they wrote off. They gonna have to rope me off some day. The drama will be gone, and then they will pray. ये वाला Ghost Town में Kanye West. Crazy meaning and death in lyrics plus pleasing beat and such a rap so relaxing that you can sleep too. Okay. Hang on. That consecrated field is enormous. I'll be searching for weeks, and I can't even get in there now. Better to scout the infirmary church first. God be with you, Henry. I hope you managed to find Bavor at last. I saw that mural of Bavor you spoke of, and I think I noticed something slightly unusual. Ah, really? What was it? That Bavor crest. In the mural, it's shown differently from your sketch. Seems to be the elevated version, as mentioned in the travel records, with the inner escutcheon. And on it is the Jerusalem cross. There's also an angel. And Bavor had himself depicted holding the relic. It looked to me like Bavor had the layout made very deliberately. I must have missed that. Or perhaps I've simply forgotten. But you're right, it does sound rather deliberate. Indeed. I still don't know what to make of it. Bavor clearly put a great deal of thought into his burial. That depiction isn't just a coincidence or some artist's fancy. It was Bavor's intention. And there's certainly a hidden meaning in it. I'll ponder it on my way to the infirmary graveyard. ओके बाय गया था एंट वाले डॉक्टर के पास. उन्होंने आज बोला कि हॉस्पिटल में होगा, ड्रेन करेंगे, 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और 40,000 से 50 का खर्चा सिर्फ ये छोटा सा मैं बताओ इतना लूट मचा रखा. बाकी उस वाले ने डॉक्टर ने 5 अलग दवाइयाँ लिखी हैं, 5 दिन खा, कहता देख लो इससे ठीक हो जाता वरना एडमिट करना. भाई यार पता है ये तो बड़ी प्रॉब्लम है यार. पता है योका ये वाली पैसों वाली, मतलब पैसे तो बहुत लगते हैं ये हॉस्पिटल्स वगैरह में. ये तो प्रॉब्लम है. आई एग्री विद दैट यार. अब क्या फिर अब वही है तो मैं फिर अगर वही करना है तो वही मतलब वही अगर रास्ता है तो फिर वहीं जाना पड़ेगा. अभी जा रहा फुल गेम स्पीड रन मार के आता. अच्छा तुम लिम्फ नोड्स वाले ये क्या है? इफ द गॉड विथ यू देन यू गोइंग विथ टू बी ऑल राइट. अब प्राइवेट वाले हैं, डराने के लिए तो करेंगे ही. ओके प्राइवेट हॉस्पिटल है ना. हाँ
चलो आप प्लीज होप करो कि इन्होंने 5 दिन का लिखा है वही वर्क कर जाओ। हाँ भाई, मैं तो मेरी पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सही हो जाए। आई होप कि भाई थिंग्स गेट बेटर सून। मेरी पूरी उम्मीद है भाई, मैं चाहूँगा कि सही हो जाए। आई होप कि हॉस्पिटल तक जाने वाली दिक्कत ना ही हो। A bit neglected, but otherwise a nice place for one's final rest. I hope I find Bavor here, so I don't have to search the whole consecrated field. Who knows who lies here? Let's not disturb them. Unmarked grave. Peace to your soul, whoever you are. All these dead are starting to make me uneasy. Memento Mori. Another unmarked grave. Who knows? Maybe I'll end up in one like this myself, and in a far worse place. I'd rather meet someone alive now. Boleslav's crest, at last. Let's hope its lord lies somewhere nearby. The armor, the crest, the sword. It has to be him. Valiant knight Boleslav Bavor. May his soul rest in peace. Only no sign of the relic. But then again, the mural showed that in his scutcheon and his crest. Forgive me, Master Bavor. You won't be needing it anymore. My God. A crusader's sword that saw the Holy Land. True honor. इतना लूट यार, फिर भी छोटी सी चीज में मतलब क्या ही बोलने इसमें भी। और ये कह रहे एडमिट कराओगे तो एक दिन पहले बस बिठाएंगे इसको, अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। और फिर स्टिचेस लगाएंगे ब्लेड मारने के बाद, और जब स्टिचेस हट जाए फिर चल सकते तुम यार, ढंग से खा सकते। हाँ यार भाई, हॉस्पिटल में पैसे तो बहुत लगते हैं, तो मैं एग्री करूँगा। मैंने खुद देखे हैं बहुत केसेस। यार दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। Let's see if I understood it right. By all the saints. Praise be to thee, Almighty Lord, and praise be to thee, merciful Christ, who suffered on the cross for us. Thank you for remembering us sinners in this time of trial, for letting me find this treasure. Amen. Nice choice of last words. And I'll be taking that treasure. Who sent you? That's no longer your concern. Get him! Take the relic from him! Go to hell! Fuck that! Show your stuff! That was something! Do it! No chance! Too slow!
I got word there was a fight here. What in the Virgin Mary's name happened? They attacked me. I was only defending myself. On monastery grounds? That's most serious. The abbot must be informed without delay. The brothers will escort you to him. I'll look around a bit more and join you soon. I also want to hear what you've got to say. दवाइयाँ भी महंगी आई हैं हाँ वो तो होती हैं that urgently requires your attention. Did you bring more news from Masters Ulbeck and Zacharias? How fare our sick? No, my lord. I've brought Henry here because we apprehended him in the infirmary graveyard. There was a fight. 3 men were killed, and the grave of the bearer of the arrow crest was looted. Boleslav Bavor? I was just telling his grace about him. The relic. Was it there? Yes. Bavor had it placed in the compartment in the sarcophagus lid. A fragment of Christ's cross. Just as Bavor's travel records said. Incredible. The Lord is with us in this dark hour. Such a treasure hidden away and waiting to be revealed in a time of need. Praised be Jesus Christ. Now and forever. And praised be the Virgin Mary, our protector. But now, back to what Ludolf said. Did 3 people truly lose their lives? They attacked me. I only defended myself. But who were they? Where did they come from? I've no idea. All I know is they were after Bavor's relic, and they were clearly prepared. Weapons, armor. Either they'd been tracking me, or someone told them about me. I never told anyone. Not until just now, to his grace. And we were alone. Ludolf, how is it that armed men managed to breach my monastery? Please accept my apology, Your Grace. The grounds are vast and complex, and with our numbers we simply can't guard it all. I take full responsibility, and will do everything in our power to ensure this doesn't happen again. Thank you. I'm counting on you. First, the collapse in the church. Then, a foul sickness. A fire. More deaths. And now, armed raiders. It's becoming too much for our already dwindling order. Why is the Lord punishing us? Punishing? Or testing? That relic, it's a sign. A promise of hope. Perhaps, Crispin. Let's hope we interpret the Lord's intentions correctly. Henry, on my behalf and on that of our Brotherhood, I thank you for recovering such a treasure for us. Let the disturbance of Sir Bavor's grave be forgiven, for you were guided by divine providence. Thank you, Your Grace. I was glad to do it. Ludolf, escort Henry to the infirmary. I'll keep the relic here and remain in prayer and contemplation. As you command. Credit where is due, you managed to recover the relic. Truly a knightly deed. May it bring us relief from this affliction. The Lord be with you, Henry. Ugh. ओके यार You pig. You got something against washing? To dust you shan't.
बर्न्ड शेड का लोकेशन देखना पड़ेगा कहाँ है। मैं जरा टॉयलेट करके आया, ठीक है। आ गया यार। सर्च द सीन ऑफ फायर।
चलो भाई पहले मैं विटनेसेस से पूछ लेता हूँ, फिर बाकी चीज़ों पे आता। Huh? I must be mad. Who's there? Greetings, friend. Good day. We're under quarantine, didn't you hear? It seems I've got a bit lost. Just take me away. Come on, then, and be more careful next time. Good day. What do you... I've still got a few questions about the fire. I've told you what I know, but go on, ask. How did you find out about the fire? From the brothers who were meant to deal with the bodies. They came to fetch their tools, but then rushed back, saying no one was to go near the corpses. Do you know this Elijah? Can you tell me anything about him? He's a lay brother, so I reckon he spends most of the day working and joins prayers once a day like the others. Alright, but what's he like? Grouchy, a fool, or a cheerful fella? I treated him once for food poisoning. He was quite unpleasant then, but otherwise I never spoke with him. And the other monks? Do they say anything about him? They do, but I wouldn't put much faith in it. Even gossip usually has a grain of truth in it. What have you heard? He drinks heavily, and before he came here, he drank away a fortune. He entered the monastery to quit, but it seems the drink's stronger than he is. Right, I get it. Don't worry. I won't repeat it to anyone. That's probably for the best. That'll be all. Thanks. Is that so? You don't seem... God be with you. Careful. I went to Brother Crispin, the librarian, to ask about that Jerusalem cross. You did well. But I take it you didn't come across any groundbreaking discovery? Surprisingly, we did. There's a travel record in the monastery archives written by Boleslav Bavor himself, and according to it, he ought to be buried here together with a relic from the Holy Land. I've got a hunch those workers might have been searching the crypt for that very relic. As I dug deeper, I found that Bavor's story is rather tangled. I won't bore you with the details. Considerate of you. In the end, I found not only Bavor's grave, but the relic, too. It was here the whole time. Can you believe it? Henry, if that relic's real, remarkable, what holy artifact is it? It's a splinter from Christ's cross. Praise the Lord. And especially now, given the circumstances. Perhaps it's a sign of hope for the sick. Sadly, it's not all good news. I was attacked at Bavor's grave by armed men who were after the relic. How did they get in? And how did they even know about it? Ludolf's men were supposed to keep not so much as a mouse from slipping through.
Someone was watching me earlier in the crypt when I was looking for Bavor's grave. It was probably one of them. By all the saints. If they made it all the way to the crypt... There's nowhere in the monastery that's truly safe anymore. We should keep that in mind. At least the abbot and Ludolf are aware. They questioned me straight after the fight, so Ludolf's men will be more watchful than ever. And the relic? The abbot kept it for himself. Said he wanted to study it and pray over it for the protection of the sick. That's as it should be. As the highest authority in the monastery, he alone should decide what happens with it. Well, I reckon that's everything about Bavor then. You've been busy. And you managed to uncover a few of the monastery's secrets. Only for more questions to arise. All in good time. No one even knew they existed before, and now you want to solve them all in a single day? Keep investigating, but be careful. Until the last of the sick are healed, a great deal could still go wrong. Okay. We're under quarantine, didn't you hear? It seems I've got a bit lost. Just take me away. Come on, man. And be more careful next time. I heard something. Did I imagine? Bavor's relic has been found, and his tale fully confirmed. How'd you feel? Very good.
I feel as though I've repaid a debt to myself, and that always lifts the spirit. And of course, the discovery of the relic is a great event for the whole monastery. Now I truly believe that we can overcome this illness and all its tribulations, and that the monastery will survive. And for that, you have my sincere thanks. You've given me hope. I'm glad. I've lived through a few tragic events myself, and I know what it means to have hope. Wise words. I'll remember them. भाई केसीडी ने जो स्टैंडर्ड सेट करा है ना भाई एनपीसीज का गजब है। हेलो भाई रैंडम भाई, वेलकम, क्या हाल है? What was that? I heard it coming from here. Did I imagine it? There's a lot of you here. Which one of you is Elijah? Where are you trying to sneak to? Greetings, lad. What brings you here? फुल केसीडी मॉल सेट कर दिया है, जब जहाँ भी देखो केसीडी। यस यस भाई, आज तो मेरी लास्ट स्ट्रीम है इस गेम की भाई, इसके बाद कंप्लीट हो गया पूरा ये। I need to speak with Elijah. Do you know what's up with him? Try the cellar. I caught sight of him sneaking down there this morning. If you saw him, he didn't sneak all that well, did he? Exactly. He made quite a racket doing it. Till we meet again. I'm sorry. मतलब दुख होगा आज की स्ट्रीम के आज खत्म हो जाएगा नेक्स्ट, या फिर विचर 3 का मैं सोच रहा हूँ वही कंटिन्यू मारूं बचा हुआ। बट ये है कि इस गेम को याद करूंगा मैं बहुत, ये गेम अलग ही फील थी भाई। दिस गेम वाज समथिंग एल्स। ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था भाई, ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा कभी नहीं मिलेगा। Hey, get out of here! What's it gonna be? I'm going. Well, what'll it be? Hear me? I've lost my patience. Surrender and I'll take you to the abbot. I've had enough. You're under arrest. For fuck's sake, put that thing away or you Ah! Fucking hell! Now you'll see what we do with criminals, bastard! मार दे भाई। Fuck you! What the... What? थैंक यू भाई। ब्लड एंड वाइन बचा है क्या? ना ना, डीएलसी या साइड क्वेस्ट वैसी नहीं बची, मेरा मतलब था क्वेश्चन मार्क्स और वो एक्स्ट्रा कंटेंट जो है सब हो चुका है भाई। वो सब क्वेश्चन मार्क और कॉन्ट्रैक्ट्स ही बचे हैं मेरे, तो मैं सोचा था वो सब कर लूँ पूरा गेम, मतलब वो मैप क्लियर मार दूँ उसका। जैसे इस गेम को मैंने पूरा करा है ना वैसे, और वो तो वैसे भी फास्ट पेस गेम है विचर, वो तो मतलब उसमें तो पावर्स वावर्स होती है फैंटेसी वाली, तो वैसे ही जल्दी हो जाएगा। बस वही प्लान था मेरा, वही सोच रहा था वो कर लूं।
of you here. Which one of... Greetings, lad. What brings... If Elijah... I saw him this morning staggering off to the cellar. It looked like he'd been through a lot. Thanks. God be with you. हेलो भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ। सी गेमिंग विचर तो क्या ही एक्सपीरियंस है, बहुत तगड़ा है भाई। There's a lot of you here. Which one of you is Elijah? मालूम है, आज मेरा एग्जाम खत्म हो गया। हाँ, तुमने बताया था ना कल की लास्ट एग्जाम आ रहा है इंग्लिश का। कैसा रहा भाई? और कितना टाइम है रेस्ट करने का, छुट्टी वगैरह? Saint Wenceslas, King, and you, Saint... हाँ, अरे अच्छा नहीं गया। कोई ना, पास जितना भी गया हो तो चलेगा। बहुत लेंदी पेपर था। कितने घंटे का था? What? You can't be here. It seems I've got a bit lost. Just take me away. Come on, then. And be more careful next time. मान कर चलो 40 मार्क्स का पेपर, करीब 20 मार्क्स डबल। ओके ओके। एक घंटे का था और मैं इधर स्लो आदमी। अच्छा, तुमको मतलब तुम टाइम लेके लिखे तो सोच के उसमें टाइम लगा। समझ गया। हाँ ठीक है, 1 घंटा नॉर्मल है। What do you want? और मेरा और गंदा गया। हाँ, अब मेरा को अनसीन पैसेज में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वहीं सबसे ज़्यादा बड़ा, और मैंने उसी का सबसे पहला शुरू कर किया। अनसीन पैसेज भाई, मेरे को सालों हो गए। सेव मान कर चलो 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज, 25 मार्क्स का जितना लिखने वाला था। अच्छा, समझा।
और स्टार्टिंग का 20 मिनट कैसा गुजरा मेरे को पता ही नहीं चला, और उतना मैंने 1 मार्क का अटेम्प्ट किया 20 मार्क में से, उसका चलते मेरा बाकी सारा टाइम गड़बड़ गया उस एक क्वेश्चन को। अरे He's blind drunk. He can barely speak. Are you with me? I've got something to perk you up a bit. What is it? Schnapps? We're out of schnapps. So stop whining and drink. Oh, bloody awful stuff. बस सोच सकते हो कितना खराब गया होगा एज अ साइंस स्टूडेंट। अरे बाप रे। Better. बट स्टिल आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड शो माई कैपेसिटी टू एवरीवन। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेल डन भाई। अच्छा ऐसा ही होना चाहिए भाई, ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए। That's good. I need to know what happened during the night. I don't want to talk about it. Don't make me. I get it. You don't want to remember. I've seen some nasty things too. But sometimes it helps to talk to someone. It's definitely better than drowning your wits in schnapps. Well, all right. What do you want to know? चलता हूँ, गुड नाइट, बाय। आपसे बात करके अच्छा लगा। अरे भाई थैंक यू भाई, भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट गोल्स जो भी हो, एंड भाई बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक रेस्ट। How did you even notice the fire? What were you doing outside? I couldn't sleep, so I went for a walk. सॉरी, अच्छा लगा नहीं लगता कि आपकी स्ट्रीम में भी आना अच्छा, सॉरी अच्छा लगा नहीं अच्छा लगता है, और आपकी स्ट्रीम में भी आना अच्छा लगता है। ओके 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 ब्रो, बाय 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 बाय। It's just chance. Just chance? You sure? I don't think the abbot would be happy about folk wandering around at night. So what if I took a little walk? You sure you weren't sneaking off somewhere for a drink? You seem smart enough not to keep your booze where someone might find it. I bet you've got a nice little stash, eh? All right. Maybe I did head off to the back pond for a nightcap. I heard a dog barking like mad, so I went to see what was going on. I should have just kept out of it. Did you see anyone else at the fire? No. Just the dog was there. When you dragged out those 2 bodies, what did you do then? While I was pulling out the second one, other people had noticed the fire. One of the knights grabbed me and started yelling that I was the arsonist. Luckily, he saw the bodies and how I was covered in, well, the same filth they were. Then the people from the monastery came. They sent me away and took the bodies off somewhere. I don't know what happened after that. I need to ask about the dead, too. Are you sure they were already dead when you pulled them out? Aye. And may I ask how you knew? When I carried them out, I thought I'd roast alive in seconds. But they were cold as ice, and one of them was already stiff as a board. When I laid him down, he just crunched. Oh. Do you have any idea who those 2 were? I've no idea. It was dark, I couldn't see their faces. Thank God. As it is, I'll be dreaming about this for a long time. Did you notice anything odd about them? I couldn't see much. It was as dark as a sinner's soul. But they were soaked. Soaked to the bone.
And also, how to say it? Filthy. Both of them. Filthy from what? From shit. Right. That can't happen after death. No, I mean they were completely covered in it. Like someone had dunked them in it. Oh. Thanks. I'll leave you be now. Wait, I have no idea what to do with myself. I thought I'd finally do something right for once in my life. And how did I end up? Covered in shit, face burned, and humiliated. I'd rather never step outside the door again. What are you on about? You acted like a hero. Hardly. I'm a coward and a drunk. Who ran into the flames to save his fellow man. Aye. And what did it get me? If not for you, they'd have burned to ash and wouldn't even have a decent burial. This way they can pass on with dignity. So stop feeling sorry for yourself and be a bit proud. All right? Right. Right. Thanks. Hey, हाँ भाई look, तुमने I haven't वो told अच्छा आदमी anyone, है यार. but I found this key during the night. I've no idea whose it is, but maybe you'll find it useful. Thanks. कोई नहीं ब्रदर. Where are you now? I'm down to see. Okay.
What do you think you're doing? Wine? Could Elijah have lost it here? Overturned sacks, soaked ground. Looks like he dragged them this way. And he wasn't careful where he was going. A torch? Damn, this wasn't an accident. Someone torched the shed to cover their tracks. At least this grill is here. Rough cloth, badly tarred, and bits of leather. Probably used as knee protection for work. Oil. Burns like the devil. No wonder there's barely anything left of the shed. Go on, find your master. Huh? What was that? Don't come back. What the? Stop fooling around with those stones. Are you kidding? Stop that. Clear off. Dogs aren't allowed here. What's it doing here? Get out of my sight. No one's allowed in. Why not? Is it because of the bodies? Damn, so you've heard too. They told me not to speak about it with anyone. They wanted them buried quickly, so they can rest in peace. But until then, no one's allowed near. Master Albic sent me. He asked me to examine the bodies before they're buried. Examine them? What for? It's possible they were murdered. Why would someone kill them? The only one anywhere near them was Elijah. He wouldn't hurt a fly. But they were already dead when he carried them out, weren't they? Why would someone torch the shed unless they were trying to cover something up? Why would anyone commit murder in a closed monastery? We won't know unless you let me find out. So? Yeah, all right then. But be quick, eh? I don't want any trouble. Move on. You've no business. Now you're not getting anything.
Bugger off! Right then. Where to begin? I'll start with the younger one. देखें क्या हुआ इन लोगों के साथ एग्जैक्ट. Muscles stiff, and the body looks supple. What's that in his hair? Better mind my fingers. Rigor mortis is wearing off. He can't have been dead more than a few hours. He vomited up his guts before he died. Just like that old confessor. It's all clumped together. Looks like flour, or maybe lime. Yeah, it's flour. Ugh. Bruising, some dried blood, no broken bones. He's young, but his hands are a mess. Covered in scars, nails broken, looks like hard labor. And 2 workers did go missing. That can't be a coincidence. These bruises are odd. Regular. Almost perfectly circular. Looks like cupping marks. Someone might have tried to ease a fever or pain. I don't see anything odd here. Ribs intact, belly soft. No sign of violent death, just his back and hips are badly scraped. No blood, like he was dragged over gravel after he died. A few old scars, gravel embedded in both knees, and blood around the groin. Barely dried. Could it have leaked out after death? Mixed with bowel contents. Bloody diarrhea. Like with the infection. That's everything with this one. Now for the older one. जरा
Pale, sunken eyes, missing some teeth, though that might just be age. But that hole in his head is someone's doing. Small, round, clean, like it was drilled. ऐसा लग रहा है हेडशॉट मार दिया क्या? I've heard of that method before, used in cases of unbearable headache or seizures. But who tried that outside the infirmary? Completely stiff. Clenched tight. Like he was ready for a fight. Rigor mortis well advanced. Died long before the fire. Skin's badly scratched. And there's a thorn stuck here. Maybe a rose? Knees are scraped and scarred. He must have worked hard in his life. Stiff as a board. No broken bones. Back and shoulders all scratched up. Like he was dragged through brambles. And around his neck and chest he's got red blotches on the skin. Those blotches look familiar. They're a bit like the ones on that old confessor. Looks like this poor wretch caught the same thing. Well, what's clear is they didn't die in that burning hut. More likely they succumbed to the infection spreading in the monastery. The symptoms match perfectly. Either way, it wasn't a cold-blooded murder. Someone tried to treat them, brutally, but still. And it didn't work. Someone must have hauled the bodies into that shed. And it left marks on them. It might be possible to trace where they came from. It seems I've got a bit lost. Just take me away. Come on then. Be more careful next time. Don't you know there's a quarantine?
around here for, you crook. That's one deep rut. Whoever dragged them, poor wretches gave them a rough time. नाली भी है पूरा. Now I get what Elijah was talking about. Ugh. Knock it off, will ya? Go on then. I'd use them, no doubt, but they're going to rust. And when they rust, bloody hell, spit it out already. It'll all swell, crack, water will seep in, and the whole... We'll look like idiots. Instead of pay, I reckon we'll get our asses kicked, and we'll be lucky if we get to leave in one piece. Could have just said, despite a fuck up. खा लूंगा यार.
Oh, that's disgusting. There's no other way. A cart and rose bushes. If he dragged them through the ditch, no wonder they were in such a state. This way won't work. I'll have to find another route. Locked, damn it. Something's jammed in the lock. There's no way I can pick it. Nah, it's hopeless. I can't get it open. Nah, it's hopeless. I can't get it open. Only a madman would drag them this way. Someone would have seen something. I need to go another way. No. Only a madman would drag them this way. Someone would have seen something. I need to go another way. It's hopeless. I can't get it open. यहीं से होगा रास्ता. It's hopeless. I can't get it open. The cart tracks lead to the herbalists. Maybe Joachim knows more. What in damnation? You said they were better. Were you lying or just that stupid? They took a turn for the worse. It came out of nowhere, and there was no saving them. And those books I got for you. You've half the monastery's library in here. Did you even bother looking at them? I read every one, but I've told you 100 times, I am not a physician. I don't know what you all expected from me. You were supposed to use your head, damn it. Now everyone and their dog is sniffing around here. I couldn't just... I thought I made myself clear. They stay here, you don't leave, and nobody must know a thing. But what was I supposed to do? Your master... provided you with everything you needed and paid you generously. Or am I wrong? What about that fire? Were you just covering your ass, or planning to rat on us too? They were infected. For the sake of everyone in the monastery, I did what had to be done. Doing what has to be done. For everyone's sake. Dennis! अरे You're in for an ass-kicking, you piece of shit!
Did you? He's gone. Hold on. I'll fetch help. Don't trouble yourself, son. But please, stay. No. No, I'll run for Albie. Pray with me. The Lord will soon welcome me. All right. But I need to ask you something first. Yes. Did you try to treat those poor souls yourself? I did my best. On the orders of Master Zacharias. अरे यार थोड़ी आवाज दब रही Fuck. I tried everything, even against their will, but either the sickness had advanced too far, or I simply lacked the knowledge. Why did you set the shed alight? Were you trying to get rid of the bodies? Get rid of them? No. But should they rot under my roof? I only hoped the fire would consume them, and that'd be the end of it. All right. And now the prayer. Our Father, who art in heaven. Oh, Christ above. Go with God. Amen. जो आसिम तो मर गया ओके आया टॉयलेट करके
ओके आ गया भाई ज़कैरियस से कन्फ्रंट करते अब To your health, my friend. Hopefully the worst is behind us. May not a drop go to waste. भाई इसमें जहर था Rats! Henry! It was his fault those two died. He was the first to know about the epidemic, and he tried to keep everything hushed up. He blackmailed the herbalist to hide them and treat them at his place. And when those bodies were found, what did he do? He said इसकी शक्ल से ये हरामी लगता है You Akamis. Good. And that Dinesh of yours too. So now you kill me. Give me just one more reason. भाई गलत टाइम पे ड्रिंक ले ली यार मास्टर आल्बिक ने वो जहरीला पी लिया मादर चोद If I were you, I'd hold back a while. For everyone's sake. अबे यार क्या थ्रिलिंग स्टोरी टेलिंग है You poisoned him. Why? Calm down. He's still breathing. What do you mean, still? Whether he survives is up to you, and whether you're finally willing to cooperate. You're mad. You want me to help you? Now, after all this? If you're looking for someone to blame, try yourself. None of this would have happened if you hadn't kept getting in my way. Don't try that on me. I thought you and Albert were friends. He never did anything to deserve this. Albert may not realize it, but half his shining reputation is thanks to me. Next to someone young and inexperienced, it's easy to look like a master. You saw it yourself. Even the Right Reverend didn't trust me. Me, royal physician to King Sigismund. But once Master Albec showed up, suddenly everything was different. And all he had to do was repeat the same things I'd already said. So you only pretended to be his friend? All the while you looked down on him? I don't need you. The infirmary has ingredients for all sorts of antidotes. We'll figure something out. You think I used belladonna and amanita like some village herb woman? No. This is my own recipe. And a damned expensive one, I'll have you know. I save it for only the most distinguished. Speak, traitor. What do you want from me? I want Albic's closely guarded records on the treatment of King Wenceslas. What? Why? Don't play dumb. Albic spent a lot of time with him. I want to know what he wrote down. So, it was you who turned our chamber upside down? Me? No. That was Dinesh. You swine. Albert confided in you that he had them, and you poisoned him so that... I was hoping to frighten him. Maybe he'd give them to me for safekeeping. But the mad old fool went and hid them somewhere. So I need you to find them. And if I bring you the records, you'll give me the antidote? Not so fast. There's one more thing. Something King Sigismund himself would greatly value. Apparently, somewhere in this monastery, there's a relic from the Holy Land, brought here years ago by a knight. And that's what those workers were after?
But they failed. Morons. You're not talking about Sir Valentine's sword, are you? No. I'm talking about the relic of Sir Boleslav Bavor of Blatna. So you mean there's more than one relic hidden here in the monastery? Aren't these things meant to be incredibly rare? How should I know? I'm no chronicler. Either way, if you want Albic to leave here alive, and yourself along with him, you'll put in the work and find that grave. Or rather, what's in it. Once you've got the relic and the records, come to the church. We'll meet there. And one last piece of advice. Hurry. The substance acts slowly, but the longer you make Albic wait, the worse the consequences. And what's to stop me grabbing you by the neck, beating the antidote out of you, and dragging you to the abbot? The fact I'm not a fool. I haven't got the antidote on me. So we can go to the abbot and spend hours blaming each other. Meanwhile, Albic will die, right here on the cold ground in a puddle of his own vomit. If he's to survive, we do this my way. Do we understand each other? You miserable bloody bastard. I'll do it, but only for Albic's sake. I expected nothing less. Henry, the records, they're behind the scales. What? What scales? Albic?
ओके यारो, दिस इज द लास्ट मिशन ऑफ KCD2. इसके बाद मेरा प्ले थ्रू खत्म. This is the last quest of the game. I can't just hand the real records over to Zacharias. Henry, is something wrong? Benedict, I need you to take care of Master Albic. Lord have mercy. I had a feeling he couldn't avoid that illness forever. He's not ill. He's been poisoned. What? By whom? Zacharias slipped something into his wine. He's still alive, but if I don't get the antidote quickly... He'll die. But why would Zacharias do that? It's a long story. Right now, I need you to look after Albic. He's in his bed, and in a bad state. I'll keep an eye on him. And what will you do? I'm gonna find the antidote, and then settle things with Zacharias. Very well. May God go with you. Actually, one more thing. Does the phrase, behind the scales, mean anything to you? Scales. Well, it's a symbol of justice. The Archangel Michael is often depicted on Judgment Day holding scales. Why do you ask? Albic whispered it to me. I hoped he was trying to give me a clue. Point me to somewhere he hid something. Only, with the curfew, he couldn't have left the infirmary. Unless... No unless, Benedict. I'm running out of time. If you know anything, tell me now. All right, sorry. Albic did actually leave once. It was a few days ago, and he asked me not to tell anyone. Really? Do you know where he went? He wanted to speak personally with the Right Reverend Father Jan. But he's been warning us all along to stay away from him. I thought it strange too. But that's all I know. Even so, you've helped me. Thank you. Father, I truly hate to disturb you. You? You have no business being here. Who do you think you are that the curfew doesn't apply to you? Wait, hear me out. Guards! Zacharias poisoned Master Albic. What? What did you say? Why would he do such a thing? Because he wants to trade Albic's life for the records on King Wenceslas's treatment, and on top of that, the relic from the Holy Land. So, may I stay? Or will you have me removed? Right. From the start, then. It all began in that crypt beneath the church. Some of the workers were trying to find the tomb of Sir Boleslav Bavor. They were supposed to fix the collapse. No one gave them permission to enter the crypt. Zacharias bribed them. He'd heard that Bavor was buried here with a relic from the Holy Land, and decided to seize it for King Sigismund. The workers were meant to find Bavor's sarcophagus, but they also opened and looted nearby tombs. That is sacrilege. That crypt holds the remains of abbots of this monastery. And in the process, they uncovered coffins containing rotting remains. That's where the illness that spread through the monastery came from. So the illness, it wasn't plague.
Master Albert kept saying that all along. And so did Zacharias at first. God forgive me. I was afraid. Well, that was still only the beginning. Zacharias hid the first 2 sick workers with Joachim, who he blackmailed into caring for them in secret. He treated them as best he could, but their symptoms worsened. When they died in his care, he panicked and tried to get rid of the bodies. That fire? Those corpses? When they were found, Zacharias panicked in turn and sent Dennis to kill Joachim. Oh, God in heaven, forgive him their sins. I tried to stop him, but he stabbed Joachim and then came at me. Luckily, I managed to fight him off. I ran back to the infirmary to warn Albich, but by then, Zacharias had already been poisoning his wine for some time. I don't know what poison it was, but Albich is barely breathing and has no idea what's going on. And Zacharias? He actually laughed in my face. He'll only give me the antidote if I bring him 2 things. People hold nothing sacred. He wants Bavor's relic and Albich's records on King Wenceslas's treatment. The exchange is to take place in the church. Otherwise, Albich likely won't live to see morning. Please, Father Jan. Albich sees you as a friend. Zacharias betrayed him. You can still save him. Will you help me? From what you've said, I gather you knew about his plans. Why are you telling me all this only now? I suspected you wouldn't believe me. Even I wasn't sure for a long while. I kept searching until the pieces finally fell into place. I meant to tell you everything, but only once I held clear proof. And that, Zacharias himself provided. I'll do everything in my power. We must end this affair. Agreed. And within our walls, I shall entrust you with the relic. But please, take care of it. May it be preserved for our monastery. Thank you for your trust, Father. I'll do my best to see it return to you. From this moment, the curfew no longer applies to you. The knights at my door will inform everyone else. And do speak to Sir Ludolf. Perhaps one of his men has gear that'll suit you too. Thank you again, Father. You can thank me later. Right now. Thank you, भाई. मेरे को घूमने का मौका दे दिया. Sorry, Father. There's one more thing. Yes? Albich hid his records somewhere safe, but he didn't manage to tell me where. All he could get out was they're behind the scales. Did he ever mention anything like that to you? I'm afraid not, lad. We never spoke of it. Did he speak about anything else? Since the curfew was declared, he only came to see me once. He asked for access to my private chapel. And? Did you allow it? No. Oh, Lord, forgive me. I didn't want him bringing the sickness here. I told him to use the infirmary chapel. But there were already sick men there too. Still. Thank you. Thank you, sir. चलो कर्फ्यू से मैं हट गया. एक सेकेंड.
चलो यार सही है, मेरे पे नहीं बना है कर्फ्यू, अब मैं आराम से एक्सप्लोर कर सकता। बहुत अच्छा गेम है ये। Greetings. Oh, you know what a bath is, don't you? I heard you're doing combat training here. That's right. As a brother in arms, I see to it that our men are well prepared. Carl's the name. I'm Henry. I've only just arrived in Sedlitz. I've come as a protector of Master Albie. That's an honorable task. Guarding someone so important. You must be quite the fighter. I can handle a weapon well enough. By the way, Slavek and Yeshek send their regards. I ran into them in the infirmary. Don't even mention those two. I like them, but they never know when to stop. Always end up battered for no good reason. Anyway, if you'd like to train with us, you're more than welcome. What are the rules? We start with the short sword. It's a quick and effective weapon. यार पहले करना था ये सब, पहले मिले ही नहीं ये लोग। We use wooden weapons. I had to ban iron, or some of these blokes would have ended up killing each other. The duel lasts until one fighter lands a... Actually... No matter. Sorry. अभी टाइम नहीं मेरे पे भाई लड़ाई Sir वड़ाई का। Ludolf, I spoke with His Grace the Abbot, and... Words already reached me. My men are ready to assist you, should it come to that. Thank you. I appreciate it. But there's one more thing. We may be facing a fight, and I arrived at the monastery without any equipment. Our supplies aren't vast, but we can at least offer you a cuirass and a gambus. There's a cuirass ready on this stand in the tent. If you want it, it's yours. Thank you, sir. Aye. This could come in handy. Well, unless Zacharias has a hand cannon hidden somewhere. Okay, bye. I have my armor. I have armor at least. What the? Did I step in shit? Oh, you. I, didn't have time for a bath. But I'll go and have one now. Hey, you're not allowed here. Correct, you nightcrawler. अरे यार अब ये तीनों टास्क कैसे साला दे दिए, पता ही नहीं कहाँ पे जाना है। भाई अब मेरे को YouTube से देखना पड़ेगा कहाँ पर हैं सारे, ऐसे तो मुझे मिलेगा नहीं, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है? एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। फाइंड किंग वेंसेस्लास मेडिकल रिकॉर्ड।
Okay, okay. Where's God? Sir, can you spell? Yes? If it's... I just wanted to ask. My journey to Bohemia originally had a different goal. The Order has interests all throughout Europe, and the Kingdom of Bohemia is no exception. We are seeking support. Capable men and supplies for our eastern border, where tensions with Poland and Lithuania continue unabated. I had plans to deal with certain nobles as well as Sigismund himself. But this situation is an unfortunate complication. Instead of diplomatic negotiations and recruitment, I now oversee order here, so that we can support the abbot and prevent the infection from spreading. Duty is duty, whatever form it may take. The monks seek order and discipline in their faith and work. We seek order and discipline in defending our faith and our lands. What does your order do? Our order, the Brothers of the German House of St. Mary in Jerusalem, founded directly in the Holy Land, stands as a bulwark against paganism. We spread the Christian faith among nations that have not yet been baptized. And we administer the lands that we have conquered with God's help from the pagan Prussians and in the Baltic region. From our stronghold in Marienburg, we spread the Christian faith, build castles, towns, and monasteries, and bring settlers from Germany to populate these lands. What is the history of your order? The order was founded in the Holy Land more than 3 centuries ago as a hospitaller brotherhood for German pilgrims during the siege of Acre. Pope Celestine III confirmed us at the time, and thanks to the Golden Bull of Rimini from Emperor Frederick II, we gained the right to conquer the Prussians' lands and hold them in fief forever. That was the beginning of our mission, to bring faith in God to the Baltic region and defend the borders of Christianity. And there we built a state stretching from Prussia to Livonia, with God's grace, but also with papal bulls and imperial privileges. But our role was not only military. We founded cities. अबे भाई क्या कर रहा हूँ मैं? मेरे को अब ये क्यों मिला इतना लेट? पहले मिलता तो बात करता अच्छे से. We remain guardians of this tradition. What's going on in Poland? Tensions are rising. The Poles and Lithuanians are beginning to unite under the rule of the Jagiellonian dynasty, which is a threat to our position. Although the Lithuanian Grand Duke Vytautas formally accepted baptism, his alliance with Poland threatens Samogitia, which belongs to us. Sigismund promises us support, but his position is weak. That is why we are preparing reinforcements at the borders. However, if diplomatic negotiations fail, we will have to defend our lands with the sword, with God's help. How does your order work? We are divided into knights born into noble families, priests for spiritual administration, and servant brothers for ensuring the smooth running of the entire order. At the head stands the Grand Master, elected by the chapter. Under him, the provincial master for Prussia and Lithuania. Each province has its own governor. Each castle, its commander. Our order is based on obedience, poverty, and purity. But ambition is also important. Our strongholds, such as Marienburg, are hubs of power and trade. The military structure is strict. From foot soldiers to heavy cavalry, everyone is subordinate to a single commander. But we are not just warriors, but custodians as well. Our laws apply to everyone, from farmer to bishop. Your name, sir, Ludolf. It isn't very common, but I think I've heard it before.
Perhaps you have heard of Saint Ludolf. Yes, it is rather by chance that I, his namesake, am now here among the Cistercians. He vehemently defended the church's rightful properties against the Duke of Saxony, who tortured him to death for it. Our order is now in a somewhat similar situation, where we must defend our rightful property against many usurpers. I therefore often pray to my namesake and ask him for help in our affairs. Where does the Order get its money? Our wealth comes from gifts, especially from generous nobles and rulers who give us land and property for the eternal glory of God. We manage vast estates, from which we obtain grain and taxes from our subjects. Military campaigns bring us new territories and further resources to advance our cause, whether through trade, farming, or serving those in need. Everything serves to strengthen our order and defend our faith. I'd like to donate to your order. I'm glad to hear that. God may be on our side, but we are still here. Thank you. Every bit of help counts. And this way you are supporting not only the Order, but all of Christianity against pagan invasions and Polish... Sir, you mentioned you're in need of capable men. Does that mean I could join you if I wanted? Ha ha! It's not that simple. To join the Order, you must fulfill 2 requirements. First of all, you must be from Germany. Or it... Well, I understand. And second of all, to join a German Order of Knights, what do you think the second requirement might be? I have to be a knight? That is right. But even if you are not either of those things, you can still join us as a half-brother. Halbbrüder. They are not subject to such strict rules of poverty, cleanliness, or obedience as we are, and they do not have as many privileges. Sorry. ठीक है भाई, सुन लिया. अब मैं जा रहा हूँ. एटलीस्ट अब मैं फ्रीली रोम कर सकता हूँ ना, तो मेरे पास ऑप्शन है अच्छे से एक पार्ट करने का. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. God be with you. How's the watch going? अबे यार, मन करो ये ऐसी साला. जब इसको बंदी होना है ना, चल बार बार चल बंद मत कर, सीधे स्विच ऑफ कर. हट तेरी. गेम पे फोकस देने थे, बार बार बंद खुल रहा है. So this is where they put the altar Voitor and I painted. Beautiful work. Oh! I'm sure people won't forget the name Voitor anytime soon. वो वॉइटा का है.
scales are here, but the records are not. Find the king Wenceslas. Find the king Wenceslas medical records. Where are you now? ओके इधर है, ठीक है। मेरे को है ही नहीं यार फिनाले देखने के, थोड़ा बुरा लग रहा मुझे। कितना तगड़ा फिनाले चल रहा गेम में और कोई है नहीं देखने को। आके क्या फिनाले देख के जाते सब मजा आता। इतनी बड़ी सीरीज देखी सबने। There are scales here too, in the hand of Archangel Michael. Find King Wenceslas. ओह हेल ना भाई हेल ना। अबे यार ब्लैंक हो गई यूट्यूब। हट तेरी की साला यूट्यूब ऐसी की तैसी तेरी। Those are the records. Lord Almighty. Thank you. Goodness. No wonder Albert guarded them so closely. There's a lot here that could be used against the king. अब फोर्ज करना पड़ेगा। Forge King. So find out how to forge documents. KCD2. ओके मेरे को लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, ठीक है समझ गया। मैं वैसे वेट भी कर सकता हूँ बट एक बार जब खेल ही रहे हैं तो थोड़ा
ये भी कर लेते हैं। भाई लेकिन अगर मैंने गलत फोर्स किया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं इसलिए भाई मैं खुद से नहीं फोर्स करने वाला। Fuck is that stink? Kitty! Kitty! You. Good evening, my friend. I've got a bit of an odd question. That doesn't surprise me. We live in strange times, brother. Well, that's for certain. But if I wanted to make a book or a document that matched the original as closely as possible, what should I be careful about? Why are you asking? All our lives depend on it. If you help me, we might be able to get that illness under control. The one threatening all of us. But what's that got to do with forging books? A lot. So much that I've not got time to explain it all to you. All right, all right. You must make sure to choose matching covers and the same type of parchment. If you have the original in front of you, it shouldn't be hard to imitate the script and style. Covers? Parchment? Where would I find such things? That I truly don't know. Here in the library we only have very basic parchment. It depends what exactly you need. Perhaps in town, some scriptoriums might be better equipped. Scriptoriums? Right. Thanks. So, how to go about it? These records should definitely resemble the original as closely as possible, so they look right at first glance. How would such a document begin, I wonder? In the records I've read, Albert didn't address the king directly and kept things factual. अरे भाई अब नहीं पता मुझे। देख लूँ क्या 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 होगा इसमें, डॉक्यूमेंट्स का देख लूँगा। without addressing There's no greeting. Albert just goes straight into advising the king. head and stomach pain होगा अगला। ओके Well, what next? I suppose I should get straight to what's troubling the king. But what might that be?
The records mention headaches and stomach pain. So the king's got headaches and stomach cramps. But what did Albic advise him? Definitely advised him to drink less. Right. That's about halfway. What next? Sigismund is surely wondering why King Wenceslas has no heirs. And Albic knows that King Wenceslas is infertile. Then I'll just write that King Wenceslas shall never have an heir. He's infertile. Right, that's sorted. And how to end it? Maybe some general recommendation? Don't lose your temper, and plenty of salt and pepper. That's advice. ओके भाई साहब हो गया. Right. That looks good. अरे दरवाजा तो बंद कर देता. अबे यार कहाँ जाना है? ठीक है. चलो भाई लोग, टाइम फॉर द फिनाले आई गेस.
भाई मेरी लास्ट स्ट्रीम का लास्ट टाइम। चलो भाई साहब, लेट्स गो मैन। यार जर्नी इज एंडिंग टुडे, इट्स ओवर मैन। प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लास्ट कट सीन। यहाँ से कितना लंबा चलेगा इस पे डिपेंड करेगा। मेन नैरेटिव यहाँ भी एंड। भाई क्या कट सीन है बहनचोद, थ्रिलिंग, Zacharias. Do you have it? I do. It's good to see you keep your word. I hope you'll do the same. You did the right thing. It'd be a shame to let someone like Albec die so disgracefully. But first things first. Do you have the relic? I do. Here it is. Christ. Truly. Dear God. It's unbelievable. Sigismund, he... Yes, but... Also, hand me the records. I want the antidote first. A fair exchange. Touching, but you're not the one in charge here. There. Let's hope they're worth the hellish torment you've got coming. Oh. Judging by what's written in them, I'd say they are. Thank you. May the Lord repay you. लेवेटा हट तेरी की। Men, hold them back! Stop this madness! This is the house of God! भाग गया गांडू। पकड़ पकड़ पकड़, मारा चल पकड़। For the cross! कहाँ है गांडू? The door's open. This way. Yes.
Locked. But where am I supposed to find the key now? Oh, damn it. Where now? All right then. Victory or To get your death! ass kicked, are you? Oh! Ah, fucking hell! पकड़ा गया गांडू। Give up! Just give up, brother. You can't do this. Oh ho 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 ho! अबे यार! It's over. You. If it wasn't for you, none of this would have happened. But what? But we can still fix this. We can still help everyone. I don't believe a word you say. Give me that antidote and surrender. And then what? You take the only thing you need, and then you kill me, like you did Dinesh. Or you arrest me, and you hand me over to Sigismund. You know very well what you'll do to me. This has to stop. Enough people have died already. Now give me that antidote. I can't. I can't disappoint Sigismund again. I'd rather take my chances with you. अबे क्या कर दिया मैं मॉक करना था मुझे उसे You fight like an old hag. Zacharias. At last. Peace. Ironic, don't you think? Why? Why all this? I had no choice. Sigismund. I couldn't fail him again. What's Sigismund got to do with it? I couldn't help him. And he doesn't forgive failure. Not in himself.
and even less so in others. What was it you couldn't help Sigismund with? That's between me, His Majesty, and soon, God. Don't you want to ease your conscience? And what would be the point? So you could finally leave it all behind. But that wouldn't ease my conscience. Maybe not. But aren't you tired of all the secrets? Don't you want to be rid of them, once and for all? Oh. There's something to that. So, if you really want to know, I couldn't help him. With an heir. Sigismund is... infertile? Their whole line is cursed with it. That never occurred to you. अच्छा दोनों का ही यही हाल है. No heirs either. Well, at least no legitimate ones. And Albec knows that all too well. Why did you want the relic? What would Sigismund even do with it? Sigismund. He's unable to father an heir. I tried to treat it somehow, but it was all in vain. And his patience was wearing thin. So I turned to God, with God's help. Perhaps Sigismund would finally succeed. And I'd win back his trust. Why did you want Wenceslas's records from me? Don't you get it? I wanted to know how Albec treats Wenceslas. His infertility. And Sigismund would certainly appreciate it if I told him all the secrets of Wenceslas's health. Maybe then he'd give me another chance. If there's anything else you want to say, now's the time. I'd like to, but I can't. It hurts. I can't speak anymore. Here. This'll ease the pain. अबे तेरे को strong नहीं दूंगा गांडू. Weak ले. What was it you wanted to tell me? I didn't want any of this to happen. You've already said that. I mean all of it. Even before the Sigismund, I was so happy when he made me his court physician. I was so grateful to Albec. Then, when he found out I knew about poisons. At first, it was just once. But then, he kept asking for more. And then he didn't ask. He all... भाई क्या कट सीन है बे. I didn't want to be a wicked man. Why are you telling me this? So you'll live better than I did. So you'll always think carefully about who you serve. Give me the antidote. Don't worry. Soon, you'll be able to take it yourself. Your time has come, Zacharias. Rest in peace. Will you pray for me, please? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth as it is ले in भाई heaven. तेरे लिए Give कर us this दिया. day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. गया बेटा, it's over. We got the antidote. खत्म भाई गेम हमारा भाइयों. यार इट्स ओवर मैन. जी थैंक यू आरटी भाई. हमारी केसीडी 2 की जर्नी समाप्त हुई. 54 स्ट्रीम्स. आओ मैन. नाइन्थ जून को स्टार्ट हुई थी भाई ये जर्नी. फाइनली नेक्स्ट गेम कौन सा भाई? आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू विचर 3 का रिमेनिंग कंटेंट. बड़ा ही गेम है बट फास्ट पेस है कंपेयर टू दिस. और भाई मेरे को गुड एंडिंग मिल गई इसको इसमें. बहुत प्यारी ये क्वेस्ट थी मोनेस्ट्री वाली है. एंटीडोट बना के हम लोग पूरे मोनेस्ट्री में फैला देंगे, सब लोग सही हो जाएंगे. नॉट केसी 2 केसी केसीडी सीरीज की जर्नी एंड हो गई. सही बोले. आज क्या तारीख है? ओके 4th को मैंने खेल रहा था ना. ओके भाई 3rd मार्च को केसीडी 1 मैंने स्टार्ट करा था. आई स्टिल रिमेम्बर. फुल 1 मंथ ले गया भाई. उससे ज्यादा भाई. ऑलमोस्ट 2. पता लास्ट का कट सीन ही चलेगा और उसके बाद फिर खत्म गेम भाई. भाई मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस बना ये. विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वॉर हॉर्स गेम. अब मोनेस्ट्री से बाहर जा सकता मैं फाइनली. मोनेस्ट्री का लॉकडाउन भी हट गया भाई. कल लाइव करोगे? पता नहीं यार. शायद करूं शायद ना करूं. या क्या पता कुछ दिन बाद ही लाइव आऊं. बस खेल तो सकता हूं बट फिलहाल के लिए इट्स ओवर भाई. इन लोगों से बात कर लेता जरा मैं. Everyone standing Take a here break. is here thanks to हाँ you. काफी कर तो लिया गेम. Please me. But you're wrong. I may have helped Hilden, but I wouldn't even be here myself without you. I can't imagine how it all would have turned out if not for you and your courage. You should be grateful to Lord Pisek. He was the one who insisted I go with you. I just carried out my task. You're right. At least in that Peter has a good eye for who to trust. Unlike me. You're thinking of Zacharias? How could I have been so foolish?
he was your friend after all. You couldn't have known what he'd become. I पे नहीं करता है ना ना. Did you really know him as well as you thought? Did I know him well? Do you know how Zacharias even got his position at court? It was I who recommended him to Sigismund to be appointed his personal physician. I handed Zacharias straight into the usurper's clutches. The venomous vipers writhing at the feet of the self-proclaimed king surely influenced him. Zacharias was responsible for his own actions. Whatever Sigismund demanded of him, he still had a choice. Time will tell. Right now, I don't even know what to think. What will you do now? Return to Kuttenberg? Yes. Just as soon as I get that letter of recommendation from Father Jan to Sigismund, so I can visit King Wenceslas. I think he owes you that, after everything you've done for the monastery. You risked your own neck. Unwillingly. But it still makes a strong argument in my favor. Sigismund is holding Wenceslas in Vienna. Will you head straight there, then? I'll wait for the first suitable opportunity. Gather everything I need, and then set out. And what about you, Henry? What's next for you? Well, I've already done what was most important here. And where the road takes me next, God knows. But my lord is actually getting married soon. So, I should probably be there. I'll go and speak with the others. I won't keep you. वो है इसका मास्क उतार देता हूँ. वो प्लेग से बचने के लिए पहना था मैंने. हम लोग को लगा था प्लेग वगैरह और बीमारियां वगैरह फैल रही इलनेस उससे बचने के लिए. मास्क पहले हटाओ भाई. Greetings. What do you want, lad? You're looking well. Henry! Oh, it's good to see you. Hi, Constantine. And you, Constantine. What happened after you came back from the garden? Exactly what you'd expect. I soon fell ill, but the Lord entrusted Albic with a great gift. His healing saved many lives. He managed to save my life, too. God bless him. How did you get into the garden without being caught by the guards? Well, let's just say it wasn't my fault. If you like, come and see me sometime. I can tell you more about it. What will you do now? Not much changes for me. I'll continue to wait patiently for my reunion with Christ. In any case, I'm glad things turned out well for you. It was good to see you again, Henry. May God be with you. Till we meet again. God be with you, man. Thanks for sparing me. You could have killed me, but you didn't. It was no pleasure. Being locked up anywhere is awful, but in a crypt with corpses, that's something else. Maybe you deserve to be punished. I wouldn't blame you. I knew it wasn't right to shut you up in that crypt, but I didn't know what to do, so I just did what I was told. Looks like your conscience is already doing its job. Well, it's all behind us now. At least next time you'll think twice before doing something so daft again. That won't happen. I'll be avoiding graves and crypts for the rest of भाई my इसको मैंने days. नहीं मारा था. मैंने छोड़ दिया था इन लोगों को. मैं किसी को मारा ही नहीं इस क्वेस्ट में. मरता के सारे वर्कर ही हैं भाई. They are just doing what they are asked. How are you feeling, Valerie? Better now. I can breathe again. And the rash is gone too, praise be. Soon I'll be singing through work again. I'm glad to hear that. Your brother cared for you devotedly. He stayed at your bedside all day. But the real credit for your healing goes to Master Ulbig. There's one more thing still needing settling. Sister, I told you to let go of Zdeněk already. Easy for you to say. He threw dirt on poor Blažena's name, and now he stands here like nothing happened. God's mill grinds slow, but each shall reap what he's sown. Could do with grinding a bit faster for once. Discord पे भी हो क्या? हाँ हूँ. Discord पे हूँ मैं. मेरा है account. Maybe something could be done about that.
Did you find something? Was he hiding something in that cellar? I found barrels of watered-down monastery wine. Zdeněk was secretly diluting it with water in the cellar. And when Blazena caught him, he pinned the thefts on her so no one would believe her, right? That lying bastard. Valerie, don't talk like that in church. But you're actually right. Once this is all over, we have to report it to the right reverend. I'll go to him. If I've started this, I'll see it through to the end. Thanks. He might not even have believed me. I'm in your debt, Henry. And for Blazena. Take care and come see us sometime. God be with you, Henry. Thank you. Careful. Don't be so calm. Could have broken someone's neck. We survived, thanks to you and Master Albic. Thank you. Also, for that other thing. I don't know what you're talking about. That's very good, Henry. And I'd like to repay the favor. I'd be glad to teach you something if you come and see me in private. Maybe I will. Farewell. Finished. It's you! My name is Henry. Yaroslav. He might be the one you owe your life to. Hello, bhai. The Welcome. right reverend didn't cast us out. He could have exposed us, but he didn't. With all my heart, I thank you. Henry, Yaroslav wants to continue writing his book. Talk him out of it, please. His book? I thought it was our work. Why should I talk him out of it? If we hadn't been Can meeting speak in English? secret, Yes, I can speak English, maybe brother. few of Welcome, us brother. would How are you? feel I think Wojciech is right. Finally! Thank you, Henry. But why? Because of you and that cursed book, people died. You bear responsibility for that. No. Even if there's some truth to it, and we are to blame. I'm good. I'm also good, man. I finished this game just now. Maybe Everything done. still be here All if we- missions, all That's quests, exactly why. everything. That book is the last thing we have Just left of her. talking to these If I don't NPCs, finish it, then it's over. then what was it all for? As you wish. But I warned you. I'm sorry. Have you played Kingdom Come Deliverance? Yes, of course, man. I played it during March. Because I wanted to play in order and don't miss the story, that's why. Okay. Try the next game as Uncharted. I've played all the games already.
Is it true is Henry son of Sir Radzig than Henry's? Have you played KCD 1 and 2? First of all, tell me. I mean, if you have. Christ, what do you want? God be with you. I suppose you're getting ready to leave us? I'd like to stay a little while longer, if that's all right. Of course. You and Albeck helped us so much. God knows Yeah. our brothers would no longer be with us. You have played or not? If you have played, then only I will tell that what you are telling is right or wrong. Not for Albeck's treatment. That wouldn't have happened if you hadn't found the antidote for him. Albeck owes you his life, Henry. Well, I guess you haven't played. I would say find it out yourself. I played KCD, not finished it. I would say finish it, you will find it out if the spoilers you got are actually true or just made up. Will I be allowed to visit the monastery again someday? Of course. You'll always be welcome here. What will become of the monastery now? The sickness has passed, but still... Still, we'll feel its consequences for a long time to come. Once the people hear of it, pilgrims will avoid the monastery for a time. So the spoiling KCD on right I played. Ah, yes. Still, could have turned out far worse. You should complete the game. I didn't mean to sound You will, ungrateful, Henry. that would be better. I just don't want to delude myself. Avoid spoilers as much as you We've can. got a lot of renunciation ahead, and even more work. Suppose I'll be going now. Hopefully, we'll meet again soon. But Master Albeck helped too. At the infirmary, I saw how illness can change a man. God be with you. I can't wait for it to be properly enshrined in the chapel, or perhaps even granted a chapel of its own, a site for pilgrims. I'm sorry. So, how are your wounds? Any Not better? that I still upgrade and all skill and max. Could have gone a Ah, lot yes, worse. you should do that. We lost some damn good lads here. Death doesn't choose. You should explore much as you can. That's the best way of playing this game. We can learn something from all this. That it doesn't pay to take needless risks. But what kind of life would that be? I prefer a different saying. Life's not for cowards. And he who's afraid shits in the hall. See? You do agree in the end. I learned more I have to leave now. The enemy is too strong for me. This game is difficult, man. It wants you to play like it wants you to role play Henry rather than being a like no matter how many games you have played in your lifetime, you can't win in this game unless and until your Henry gets upper level. You have to keep playing the game and get better. That's why I think this is the best role playing game. It's over, man. Kingdom Come is over, man. What a journey it was. I played this game like almost 5 hours just for upgrading. That's the point of playing this game. This game is role playing game. This game doesn't treat you as the chosen one or the main character of the game. It actually treats you like you are just another person or NPC existing in a world which runs without caring for you. That's why it's very realistic game. And I like it.
first game has a better story in my opinion, KCD 1. But 2 is overall a much better game, more polished combat, much better choices, and better scaling. Heal. Okay. I will go to Suckdoll and tell if there is option comes there any option comes of telling. And guys, this is to the last stream of KCD, man. So no more streams of KCD from next time. I will definitely miss the game, man. The longest game I've ever played on my YouTube channel. Goodbye, Kingdom Come. Thank you, Warlords, for giving me the greatest gaming experience. Is Skalit's map? Nah, actually we are in different region. There are two maps in this game. One is named Trotsky, second is named Kuttenberg. The reason Skalit's isn't there because at the end of KCD1 we change our location. But, because we have to come to this part for story purpose. Greetings, you might find. I'd rather. Wow. What? On my soul. He says it. Well. Nah, I don't want anything right now. I've played this game more than enough. This game is set in different region. That's why Skeleton and that Sasau region map isn't available. But there are characters from KCD1 available in this game. You will find them. When you come to this game, there are those characters. Man. Thanks you, Warlords, for the greatest gaming experience of my lifetime. Bro, all of this is destroyed. Okay, Suckdoll isn't available anymore. I thought it's maybe some things are still working, but it's not. Battle of Suckdoll destroyed everything. Okay, I will go back to my forge house, sleep there, and with that, my KCD journey comes to the end today. Okay, man, let's go. It's the end. Bye, guys. Bye, Henry. Bye, everyone. Thank you for the greatest gaming experience of my lifetime. Wow, the Kuttenberg is bigger than. It is much bigger than the other map. Trotsky it is double the size of Trotsky. Okay, man, I'm going now. This was the last stream of KCD. I will just do some just chatting, talk. We will talk together, and with that, my Kingdom Come journey is ended. Let's sleep a bit. Let Henry take rest. What a journey, man! What a journey! This is my Kingdom Come. This is my Kingdom Come.
No more KCD streams from tomorrow, man. Goodbye KCD thumbnail as well, bye. Okay, this is the last time you are seeing this game. Bye guys. Now just we will talk a bit and I'm going. This is my kingdom come. कैसी लगी ये मेरे लिए तो हमेशा से. Yes brother, like it is greatest gaming experience I ever had in my 20 years of lifetime. It is the greatest gaming experience I had in the 20 years of my lifetime. Thank you Warlords man. And man, I will never forget this game. मेरे लिए भी, yes, for me also it is perfect game. It has some flaws. It has some flaws. No game is objectively perfect. Every game can have some flaws. But the amount of storytelling, gameplay, the role playing of Henry's story, everything was next level, man. Those flaws can be ignored, yes. Like for most part, the thing about KCD is it's the only gaming series where I care about NPCs. In other games, NPCs are just generic ass walking clones. In Kingdom Come Deliverance, they actually have their lifestyle, their name, their face, their voice. And Warlords did that with a very small budget. If Warlords had budget like Rockstar, they can make the greatest game, open world game, which can be very much detailed, way more detailed. They put a lot of details even with the small budget. They have like 40 million or something, which is very small compared to Rockstar. तेरी इस गेम ने तो लॉस्ट अंग्रेजी ला दी. अरे भाई मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को इंग्लिश बोलने का मन है. वो बंदा आया है ना चैट में, वो कहीं बाहर का है तो उसके लिए इंग्लिश बोल रहा हूँ. बस उसको समझ आए. I will miss this game, man. Henry's journey, it's ended. I don't know what will happen in next Kingdom Come if it ever comes out. I heard that they are making KCS, Kingdom Come Salvation. That game is going to be a bit smaller compared to this. If they make next KCD with a time jump, like these two games were set in 1403. If they make the other games after 10 to 15 years, then many characters will tragically die in the next game, like Radzik, Hanush, Hans, many of these. Henry can also die if they want to kill him, but he is fictional, so he isn't bounded by historical outcomes. I would like to see the backstory of Godwin as well if they make one. I think they should stop making KCD3 or any continuation would lead to the failure. I don't think it would lead to failure, but we can say that Henry's End can be considered ended. Sequels don't work well. I mean, this was a sequel KCD2, but yeah, this was a setup sequel from first game. So yeah, I understand your comment. Actually, the thing is about KCD is we can say that maybe you can consider that KCD2 was the last game of Henry, because वो ending जब आती है ना, when ending comes, उसमें ऑप्शन आता है ना चार में से एक लाइफस्टाइल लेने का. तो 2 लाइफस्टाइल उसमें वो थे जिसमें कोई एडवेंचर नहीं है. तो मैं कंसिडर कर सकते हैं कि KCD2 जो था हेनरी का लास्ट गेम था, और नेक्स्ट KCD अगर बना भी तो शायद वो किसी नए प्रोटैगनिस्ट पर होगा. कंसिडर कर सकते. वैसे हाँ, अगर नया गेम में हेनरी नहीं भी हुआ ना तो मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा कि हेनरी का आर्क हो गया पूरा. हेनरी स्टोरीज एंडेड कह सकते हैं. आई कैन एग्री. उसका तो शुरू ही किस लिए हुआ था भाई? वो स्केलेट्स अटैक की वजह से उसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और उसकी स्टोरी एंड वहीं पर हो गई थी जहाँ मार्क वाट से उसकी लास्ट मुलाकात हुई. मार्क वाट, और मेरे को बुरी चीज़ लगी ना वो मार्क वाट वाली, कि वो पूरा ऑप्शनल था वो वाला, उससे मिलने वाला. मार्क वाट वाला इतना तगड़ा कट सीन था वो स्टोरी में, लेकिन वो पूरा वो था.
ऑप्शनल था, लेकिन मैंने तो फिर भी करा था क्योंकि मैं देयर वाज नो वे कि मैं इतना अच्छा सीन मिस करता गेम में। उसको रेवेंज इविल का अपने किलर को मार दिया। मैंने तो खैर नहीं मारा भाई उसको, मार्कवाट को। मेरे को लगा वो मरने ही वाला है, लेट हिम डाई लाइक अ पिग एज ही सेड। मार्कवाट ने ना तगड़ी स्पीच भी दी भाई मरते वक्त। मतलब उसने जो बातें बोली ना कि भाई आई वॉज फॉलोइंग दी ऑर्डर, जिशका इज द सेम, डू हाउ मेनी फादर्स और सन्स डू यू थिंक यू हैव किल्ड। उसने बातें सब सही बोली, बट वो उसने सब बातें इसीलिए बोली ना क्योंकि हेनरी को ब्रेन वॉश ही कर रहा था, वरना तीर से पहले था तो अभी भी वो एक एनिमी। बट भाई क्योंकि वो ना स्लोली मरने वाला था, मैंने सोचा ना लेट हिम डाई स्लोली। मैं उसको इंस्टेंट डेथ दूंगा ना, वो पेनलेस है। मैंने कहा लेट हिम डाई स्लोली विथ पेन। और वो अपना रियल लाइफ में भी मार्कवाट वैसे ही मरा था, एरो लगने की वजह से। मेरे स्टोरी पे मार दिया जाता, कांड किया एंड वन लाइफ टेकन डज नॉट केयर। नहीं, मेरे को लाइफ टेकन वाला का सीन ही नहीं था कि उसकी लाइफ, अगर भाई ऑप्शन ये होता ना कि मार्कवाट को जिंदा छोड़ दो या मार दो तो मैं मार देता, लेकिन मुझे पता था कि वो मरने ही वाला है। मतलब वो तीनों ऑप्शन में ही मरने वाला था। या तो तुम उसको बहुत ही बुरी तरह से मार सकते हो एकदम बिना इज्जत के, या तो तुम थोड़ी डिग्निफाइड वे में डेथ मार सकते हो, या तुम उसको छोड़ दो, वो अपने आप ही मर जाएगा। मैंने कहा कि उसको मरना ही है तो लेट हिम डाई। मतलब मैं उसको जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला था वहाँ पे। अगर ऑप्शन होता कि उसको जिंदा छोड़ दो या मार दो तो मैं वहाँ पे मारता उसको। मैंने भाई वो ब्राबांट को भी मार दिया था। टकलू को तकलीफ दिया है बहुत बेचारा। भाई वो ब्राबांट को तो मैंने मार दिया था, जिसने हमारे हाफ ब्रदर सैम को पकड़ा हुआ था। उसको तो मैंने इसलिए मारा ना क्योंकि उसको ना मारना ना रेवेंज की लस्ट रोकना नहीं होता। उसको ना मारना वो वुड हैव बीन अ स्टूपिड डिसीजन। मतलब वो एनिमी टेरिटरी में बंदा क्या बोलते हैं, अगर वो खुल के निकल जाता बाहर तो वो चिल्ला देता भाई पक्का से। मैंने इसलिए उसको मार दिया। उसको ना मारना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। मैंने तो मार दिया। मैं नहीं अरे उसको मारना ही था भाई। तुम खुद बताओ, तुम एनिमी टेरिटरी में आए हो अपने भाई को बचाने, वहां पे तुम्हें एक बंदा मिलता है जो कि तगड़ा स्वॉर्डमैन, उसको तुमने इंजर्ड कर दिया है। अब भाई तुम उसको अगर भागने दोगे भाई, और ये सोच के कि मैं ऑनरेबल हूँ, तो भाई वो बेवकूफ़ी होगी। ऑनर नहीं, वो प्योर स्टूपिडिटी है, क्योंकि वो एनिमी टेरिटरी है। आप वहाँ पे उसको जिंदा छोड़ दोगे, वो बाहर आके गार्ड्स को कंप्लेन कर देगा। मैंने तो इसलिए मार दिया साले को। वो डिजर्व भी करता था मरना। उसने एडर को भी बुरी तरह मारा था। सबसे सेटिस्फाइंग डेथ लगी इस्टवान। हाँ, इस्टवान टॉथ की डेथ थी सबसे सेटिस्फाइंग भाई। इस्टवान टॉथ की डेथ थी सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग। उसको तो क्या कुत्ता बना के मारा है भाई हेनरी ने, गिरा दिया पूरा। ये इस्टवान से याद आया, वो एरिक था ना, वो नहीं मर पाया। मुझे लगा तो उसको मार देंगे, लेकिन वो बच गया। शायद उसको ना, मुझे लगा वो क्योंकि वो मरा नहीं है ना, मुझे अभी फील हो रहा है कि क्योंकि वो मरा नहीं है शायद वो उसको नेक्स्ट गेम के लिए सेटअप करके रखा होगा उन्होंने कि भाई वो रेवेंज लेने फिर से आएगा। एरिक का डोल कैसा लगा वैसे? वो पीक था भाई, पीक था। बस मेरे को लगा है वो मरा नहीं है ना, उसके ना मरना एक बड़ा कारण हो सकता है कि शायद वो उसको अगले गेम के लिए उन्होंने सेटअप करके रखा है कि वो नेक्स्ट गेम में उसको मारेंगे। वो हार गया था, वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन भाई उसकी एग्जैक्ट डेथ हमें नहीं पता ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो क्या मरा भी है कि नहीं। जहाँ तक है वो सरवाइव कर गया है। मतलब उसकी वो इंजर्ड था, लेकिन क्या वो ब्लड टू डेथ हुआ है? वो वैसा होता, अगर वैसा रहता ना कि ब्लड टू डेथ हो गया है, वो भी ठीक रखता। उसका कुछ पता ही नहीं है क्या है भाई, वो कहाँ पर है, वो भाग गया होगा। मेरे को नो हिट ही करना था। उसने मेरी गुद्दी चटका दी थी, साले को नो हिट करा था। वो बहुत गुस्से में था भाई। भाई वो इस्टवान को भले अपना बाप बोलता, लेकिन उसका वो इस्टवान को, मतलब इस्टवान उसके लिए बाप जैसा नहीं, उसके लिए उसका लव इंटरेस्ट ज़्यादा था। उसकी आवाज़ से पता लग रहा था। भाई वैसे कुछ भी कहो भाई, तगड़े प्लॉट थे इस गेम में भी। अब यार हो गया केसीडी तो। नेक्स्ट मेरा प्लान है विचर 3 को कंटिन्यू करने का। मैंने विचर 3 को कंप्लीट कर दिया था, मतलब मेन गेम, डीएलसी और साइड क्वेस्ट सब। बट उसमें
जो वो होते हैं ना विचर 3 में क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब मैंने नहीं करे थे, तो मैं वो सोच रहा हूँ कर सकता भाई। विचर 3 भी थोड़ा वो भी फन गेम है भाई, बढ़िया समझ आएगा। आई कुड डू दैट डुएल अगेन, इट वाज सो गुड। लोड फाइल मार के कर लो भाई। मैंने वैसे सच बताऊँ, मैंने उम्मीद करी नहीं थी कि मैं केसीडी 2 इसी साल ख़त्म भी कर दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं केसीडी 1 इस साल कर लूँ, बट 2 मैं शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि 2 बहुत बड़ा गेम है कंपेरेटिवली। लेकिन मैंने किसी तरह भाई दोनों गेम्स के लिए मूड बना लिया। फर्स्ट गेम का मेरा वैसे ही मूड था, फर्स्ट गेम ने मेरा माइंड सेटअप कर दिया था भाई सेकंड गेम के लिए। वो मेरा देयर वाज नो वे कि मैं सेकंड गेम को एक साल डिले करता। मेरे को पहले तो मतलब जब स्टार्ट किया था केसीडी 1, तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था केसीडी 2 तुम खेलना अगले साल। केसीडी 2 उसने बोला कि अगले साल खेलना, इस साल एक साल ब्रेक लेके, वरना तुम्हें बहुत बर्नआउट फील हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन भाई मेरा केसीडी 1 ख़त्म करने के कुछ दिन बाद ही मन करने लगा 2 खेलने का। मैं सोचा कि चलो मैं जून जुलाई में स्टार्ट कर दूंगा, GTA 6 आने से पहले कंप्लीट भी। 2 वेला है बहुत। हाँ वेला तो हूँ मैं भाई, लेकिन वेला होने का फ़ायदा भी है ना, एक फ़ायदा यही है भाई, इतने बढ़िया गेम खेलने मिल गए भाई। काम वाला आदमी शायद ही ऐसे गेम्स ऑन स्ट्रीम खेल पाए, बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसा गेम ऑन स्ट्रीम खेल पाए जिनकी मतलब फुल टाइम कोई और काम भी चलता हो। ज़्यादातर लोग जिनके आसपास 2-3 ही घंटे होते हैं दिन में खेलने के, वो लोग केसीडी ऐसा गेम सिर्फ ऑफलाइन ही खेल सकते। मतलब मेरी तरह या बाबा भाई की तरह बहुत स्ट्रीमर्स की तरह स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। आई वॉज वेरी इन्वेस्टेड इन द लाइफ ऑफ, मैं भी तेरे टाइम में पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना लगा विथ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड साइड स्टफ एंड अदर स्टफ। वो आदमी मैं ही हूँ। अभी चल रही है ऐसी लाइफ। वही भाई तुम्हारे पास टाइम कम रहता है तो तुम स्ट्रीम नहीं कर सकते गेम्स की। मेरे पास टाइम है तो भाई मेरा रहता है, मेरे को स्ट्रीमिंग पसंद है कि भाई ऐसे गेम्स भी स्ट्रीम कर लो। लेकिन आने वाले कुछ साल में भाई वो टाइम आएगा कि मैं शायद बड़े गेम स्ट्रीम ना कर पाऊँ, वो मैं ऑफलाइन ही खेल पाऊँ, छोटे गेम्स की सिर्फ स्ट्रीम कर लिया करूँगा तब मैं। भाई सब कुछ कर दिया है गेम में मैंने, मेन स्टोरी, साइड क्वेस्ट, साइड एक्टिविटीज़, और भाई इवन सब नैरेटिव वाली जो होती है ना, लेगेसी ऑफ द फोर्ज में जो क्वेस्ट है ना, मतलब जो रिपीटेबल है, उनमें भी कुछ सब नैरेटिव चलता है, वो सब नैरेटिव वाली चीज़ें भी मैंने कर डाली। सब किया भाई, A to Z है भाई। मतलब इससे ज़्यादा मैं खींच ही नहीं सकता इस गेम को, अनलेस मैं ट्रेजर हंटिंग में भी इंटरेस्टेड होता तो। इसकी लाइफ गेम बहुत इमर्सिव है भाई ये, मतलब वो रियल फील देता है ना, जो मतलब इतनी अलाइव वर्ल्ड फील होती है इस गेम की, और किसी गेम की नहीं फील होती। दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई दिस गेम इज गुड। ना हु डज ट्रेजर हंटिंग बहुत लोग करते हैं यार, बहुतों को पसंद है, मतलब मेरे 1-2 दोस्त हैं वो भी करते हैं। मुझे इसलिए नहीं पसंद ना ट्रेजर हंटिंग, क्योंकि ट्रेजर मतलब मेरे को ट्रेजर हंटिंग का प्रोसेस नहीं पसंद है, मतलब मुझे वो मज़ा नहीं आता उसका प्रोसेस में। और बाकी रिजल्ट की बात रही ना, तो ट्रेजर हंटिंग रिजल्ट में भी कोई मेरे लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आर्मर या पैसा वैसा मैं भाई चोरी करके या भाई अपना फोर्जिंग करके कमा सकता हूँ, ये सामान बेच के कमा सकता हूँ। तो रिजल्ट वाइज भी मुझे कुछ खास नहीं लगता ट्रेजर हंटिंग, और मुझे वो हंटिंग करने का प्रोसेस नहीं पसंद है। अब जैसे साइड क्वेस्ट में इसलिए नहीं करता केसीडी में कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा ऐसा नहीं मिलता साइड क्वेस्ट में कुछ ऐसे, लेकिन उसकी स्टोरी अच्छी लगती है साइड क्वेस्ट की, इसलिए करता हूँ। केसीडी ही जो है को काफ़ी ग्रैब किया मेरा अटेंशन। मुझे फर्स्ट टाइम जब ब्लैक स्मिथ का फोर्ज मिला तब पीक लगा, मेरे पास अभी भी है स्क्रीनशॉट्स हैं। मैं बहुत अटेंशन ग्रैबिंग गेम है भाई, फर्स्ट गेम से ही अटेंशन ग्रैब कर लेता है भाई। मतलब इस गेम का ये भी है ना कि इसने आरपीजी गेम्स नॉर्मली जिस चीज़ के अराउंड बने थे ना, एक फैंटेसी के अराउंड भाई, कि एक कैरेक्टर होता है जिसके पास तगड़ी पावर्स हैं, जो मतलब एक बार में 10-10 मॉन्स्टर मार सकता है, हर ड्रैगन को हरा सकता है, मतलब पूरी वर्ल्ड जो है ना, मतलब वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे गेम में। उस चीज़ को केसीडी ने पूरा डिच कर दिया भाई। ना तुम कैरेक्टर अपना डिज़ाइन कर सकते, ना कोई लेवलिंग सिस्टम है उस टाइप का, पूरा रियलिस्टिक वे में चलती है चीज़ें भाई। तुम्हें शॉर्ट फाइटिंग में स्किल बढ़ानी है तो शॉर्ट फाइटिंग करो, ये नहीं कि भाई तुम्हें अपनी स्किल बाय करनी पड़ेगी ये यहाँ पर दुकान में जाके, वो तुम्हें वो फाइट कर करके तुम्हारी स्किल अनलॉक होगी।
रियल लाइफ में ये क्रिएटिव कैरेक्टर बेकार है मुझे भी भाई, मुझे भी नहीं पसंद। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स है ना इस। मतलब केसीडी ने जो करा है ना काम, आरपीजी गेम्स को का आरपीजी गेम्स और एनपीसीज का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है एक बहुत ऊपर लेवल पे। कोई एक ओरिजिनल गुड रिटर्न कैरेक्टर दे दो बाय योर चॉइसेस। वही फोटो मोड यूज़ किया केसीडी में, हाँ यार थोड़ा सा किया बट ज़्यादा नहीं किया मैंने। उसमें हेनरी बोलता है ना इंटरेस्टिंग नाइस वगैरह, बट मैंने कभी स्क्रीनशॉट नहीं लिए गेम के। मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं लेता पर्सनली। मैं मेरा पीएस पे ये कहाँ पे रखूँगा मेरा। लेता हूँ मैं बहुत। अगर मैं पीसी पर आया ना जब फ्यूचर में तब लूँगा भाई, उसमें स्टीम वगैरह पे डालूँगा अच्छे से। मोर देन 60 एसएस लिया है मैंने। अरे भाई साहब तगड़ा चीज़ है यार। यार पता है विचर 4 के लिए ना एक बहुत वो है फिर अब केसीडी खेलने के बाद ना मेरे को भी लगता है विचर 4 पे एक बहुत वो रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मतलब वो इस लेवल का अलाइव वर्ल्ड फील करा सके। केसीडी मतलब विचर 3 का ओपन वर्ल्ड इजीली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपन वर्ल्ड है, वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम है। बट भाई जो किंगडम कम 2 ने भाई जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना एनपीसीज वाले, अब विचर वाले वो चीज़ कर पाएंगे कि नहीं वो देखने के आते। बल्कि उनके यहाँ तो वॉरहॉर्स के वाले काम भी कर रहे हैं क्वेस्ट डिजाइनिंग में वॉरहॉर्स वाले। इवन भाई मैं GTA 6 में भी मेरे को नहीं लगता है ये एनपीसीज इस लेवल के होंगे। उन लोगों ने अलग ही सेट स्टैंडर्ड दे दिया है एनपीसीज का और वो अलाइव वर्ल्ड का। केसीडी के बाद काफ़ी गेम लगेगी जो फील नहीं देगा। इट हैज़ गिवन इम्पैक्ट ऑन एवरीवन्स लाइफ, बहुत ज़्यादा यार। हिस्टोरिकल वे हिस्ट्री भी है गेम में, रियलिस्टिक भी चलती है गेम, फन भी है लेकिन रियलिस्टिक होने के बाद भी ये नहीं कि रियलिज्म में सारा फन सैक्रिफाइस कर दे। प्रोग्रेस पर्सनल फील होती है एकदम उसमें। GTA 6 हो जाए भाड़ में, नो वन कैन मैच द चार्म ऑफ ओल्ड एज चार्म। हाँ मतलब मीडिवल गेम्स की बात कर रहे हैं ना, मीडिवल गेम्स की कुछ अलग ही बात है भाई यार। वैसे भी मीडिवल गेम्स का सीन भी है यार, मतलब मीडिवल चीज़ें हैं भी फन ना। आज के ज़माने में हम लोग मीडिवल चीज़ें कहाँ एक्सपीरियंस कर पाते। एक केसीडी या विचर जैसे वर्ल्ड मीडिवल फील जो देते हैं वो हर गेम नहीं दे सकता। मीडिवल टाइम्स और पीक भाई रियल लाइफ में तो भले ही नहीं हूँ मैं, भले ही बेकार थे मैं कहूँगा। रियल लाइफ में तो भाई मीडिवल टाइम्स में पैदा होना ना एक बहुत वो था, मतलब उन टाइम्स तो सरवाइव करना ही बड़ी मुश्किल चीज़ थी। बट हाँ मीडिवल गेम्स की बात अलग है यार। अभी विचर 3 करूँगा कंटिन्यू, देखता हूँ वो कैसा फील देता वो गेम है मुझे। वो तो वैसे एक्शन ज़्यादा है और इजी गेम है बहुत, वो तो फास्ट पेस भी है इसके कंपैरिजन में। रियल लाइफ में वह मैं कह रहा हूँ मीडिवल टाइम्स रियल लाइफ में बहुत ख़राब थे भाई। गेम से भी ज़्यादा ख़राब थे भाई। केसीडी में तो ऐसे ही दिखाया गया कि कितने बुरे थे भाई। रियल लाइफ में तो मतलब तुम्हारे लिए तो ये था कि अगर तुम पे से तुमसे कुछ वैल्यूएबल सामान खो गया या चोरी वोरी हो गई तो भाई तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आज के टाइम तो क्या बंदे मर्डर वर्डर करके बच जाते हैं, उस ज़माने में लोग भाई चोरी करके मारे जाते थे। तुमने चोरी कर दी भाई तुम्हारा गला भाई जाएगा सीधे रस्सी में। केसीडी ने ये फीलिंग अच्छे से दे दी भाई मिडीवल टाइम्स वाली। मैं वो फटती थी मेरी हर रिक्वेस्ट पे भाई कि मेरे गलत आउटकम से कोई मर ना जाए। भाई बढ़िया रहा। अब मैं कल तो आई डोंट थिंक कि मैं ला पाऊंगा। मैं भी थोड़ा कुछ दिन का ब्रेक लूंगा गेम्स खेलने से। मतलब मैं खेलने को स्टार्ट कर सकता कल ही, वो पड़ा है, लेकिन जस्ट आई वांट टू गिव माई सेल्फ सम टाइम फ्रॉम दिस। बहुत मज़ा मार दिया इस गेम का मैंने। अब भाई वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा फिर से, अब दोबारा वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। वेलकम गाइस टू KCD 2। आज हम लोग फिर से एक और स्ट्रीम कर रहे हैं। आज हम लोग इतना खेलेंगे, आज यहाँ से यहाँ तक प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक ले लें, हाँ लेंगा। बहुत दिन से मैंने मूवी वगैरह नहीं देखी,
मतलब ब्रांड न्यू डे देखी है लेटेस्ट, बट ऐसे मैंने और कोई मूवी नहीं देखी। मेरे दिमाग में बहुत सारी मूवीज़ हैं, शोज़ वगैरह हैं, तो मैं वो सब देखूंगा कुछ दिन आराम से। 2-3 दिन तो ब्रेक करूंगा अच्छे से, फिर आराम से कम बैक करता। मज़ा आया भाई, लेकिन एक रेकमेंड करता हूँ ब्रॉन्क्स टेल करके, वॉच दैट। ब्रॉन्क्स टेल टीवी सीरीज है कोई, अच्छा मूवी है, अ ब्रॉन्क्स टेल, 1993 क्राइम थ्रिलर है। तब तो फिर तो देखना चाहिए मुझे। फिर क्राइम व्राइम मेरे को मज़ा आता देखने में। इट्स अ मूवी, ओके। अभी मैं भाई मूवीज़ ही देख रहा हूँ, अभी टीवी शोज़ भी मैंने थोड़ा ब्रेक कर दिया। ज़्यादा देख लिया है शोज़ मैंने इस साल। वॉकिंग डेड, सोप्रानोज, डार्क और मिस्टर रोबोट, मतलब काफ़ी अच्छे खासे शोज़ देख लिए मैंने। आज सोचा थोड़ा शोज़ से ब्रेक करके मूवीज़ देखी जाए। अच्छी है बहुत, देख ले एक बार, ठीक है भाई। गुड नाइट भाई, गुड नाइट स्वरूप भाई। मैं भी अब चल ही रहा, बस थोड़ा बात ही कर रहा, तो गेम तो कंप्लीट हो गया है हमारा। मज़ा आया भाई, जनरली वेरी ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। ग्लैड टू बी अलाइव भाई इन 2026। ग्लैड टू बी अलाइव, ग्लैड कि भाई कोरोना हो गया, बहुत दुनिया भर की बीमारियां लगी साल भर, बहुत बार डिप्रेशन भी आया ज़िंदगी में, लेकिन ये सब आउटलिव कर गया इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। और ऐसे ही देखा हो यार, रैंडम पता है सोच तो रहा था मैं, लेकिन दिक्कत ये है ना, कोई साथ में है नहीं चलने को मेरे ओडेसी के लिए। मैं सोच तो रहा था देखने का ओडेसी, बट थोड़े रीजन एक साथ में कोई है नहीं चलने को। और मेन ये कि मैंने क्रिस्टोफर नोलन की ज़्यादातर मूवीज़ देखी नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले डनकर्क देखी बस, और उससे पहले मैंने इंटरस्टेलर और डार्क नाइट देखी। मुझे पता है कि ज़रूरत नहीं है तुम्हें देखने की सारी मूवीज़, सब अपनी अपनी अलग चलती हैं, बट मैं थोड़ा वो है ना कि नोलन के वर्क को थोड़ा समझना चाहता हूँ कैसा है, क्योंकि उसकी मूवीज़ वैसी नहीं है ना कि तुम कोई भी स्किप करो, सारी मूवीज़ उसकी मास्टरपीस ही कंसिडर की जाती। भाई बहुत खुश है देख भाई, बहुत खुश है, दिखाई नहीं दे रहा वो अलग बात है। यस यस, फेस कैम नहीं भाई अपने पास, फेस कैम भाई मे बी इन फ्यूचर, बट भाई फेस कैम भाई तभी होगा ना जब मेरे को लगेगा कि मेरे घर खाली है। मतलब मैं फेस कैम तब तक नहीं करना चाहूँगा ना जब तक मेरे को ये लगेगा कि मेरा कमरा खाली नहीं रहता मेरे कमरे में, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है हमेशा। मेरे को फिर वो मज़ा नहीं आता फिर भाई फेस कैम में। मेरे को अपना चेहरा दिखाना है, मेरे घर वालों का भी दिख रहा है, वो मुझे नहीं पसंद, मेरे को अपना ही रखना है, इसलिए ये भी एक रीज़न है मैं नहीं रखता फेस कैम। अकेले अकेले चाचा बिल्कुल अलग है, वही स्लो पॉइजन माल है नोलन का यार। बहुत एक चीज़ ये भी है सारा कि देख तो अभी भी सकते हैं, लेकिन हाँ ये है ना कि बहुत दिन बाद देखने में थोड़ा फील नहीं आता शायद थिएटर वाला। डनकर कभी तक की वीकेस्ट नोलन मूवी है फॉर मी, मेरे को तो अच्छी लगी। मतलब थोड़ी वो होती ना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगी, लाइक उसकी नॉर्मली मूवीज़ कॉम्प्लेक्स होती हैं, पर डार्क नाइट वगैरह को और डंकर को छोड़ देता, आई थिंक उसकी सात मूवीज़ कॉम्प्लेक्स ही हैं बहुत। वो इंटरस्टेलर जैसे थी, कैरेक्टर्स और फ्लैट। हाँ कैरेक्टर्स ऐसे कोई वो नहीं थे भाई कि तुम कैरेक्टर डेप्थ हो बहुत, पूरा वो वॉर ड्रिवन था, ना ही कोई मेन प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटागनिस्ट की स्टोरी चल रही थी। स्पाइडरमैन का मूवी देख लिया, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, हाँ मैंने देख लिया, और देख के अपने रिव्यू भी डाल दिया मैंने, मुझे जो फील हुआ मूवी के। यार ब्रांड न्यू डे भी सही थी, लेकिन यार वो जो टोबी मैगवायर की मूवीज़ की बात की ना, वो बात पता नहीं कब आएगी। वो टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवीज़ की बात ही अलग थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इट्स गुड वॉच बट नॉट लाइक अदर नोलन फिल्म्स, और मैंने सारी फिल्मोग्राफी ख़त्म कर रखी है उसकी। ओके, अब तुमने ओडेसी देखी है क्या रिक, अभी जो आई? अब भाई नोलन से याद आया भाई,
ये नोलन ने भाई 2023 में ओपेनहाइमर बनाई, 2026 में ओडेसी। लेकिन ये मैट रीव्स की दी बैटमैन पता नहीं कितना डीले मार रहा है बंदा। 22 में पहली आई थी, अगली 28 में आएगी, वो इतने डीले करने के बाद। देख ली थिएटर में, ओके। मैं कल जा रहा हूँ ओडेसी। जा रहे? बताना भाई कैसी है। मैं कहूँगा भाई अगर मन वन करे ना तो कम्युनिटी पोस्ट डाल देना ओडेसी को लेके, कैसी लगी, अगर ये देखने जा रहे हो तो। डीसी पता नहीं वो साला इतनी डीले हो रही। हाँ भाई वो हरामखोर मूवी इतनी डीले हो रही ना, बैटमैन 2। वो साला नोलन जैसा डायरेक्टर 2 मूवीज बना दिया, तुम्हारे बीच आके तुम्हारी एक बैटमैन नहीं बनी यार उस बीच। क्या हद है। यस क्लेफेस आ रहा है दिस ईयर, उसका भी मैंने सुना। आई होप इट विल बी गुड। मैं जाके देख लिया और रिव्यू दे चुका हूँ। अच्छा आपने भी रिव्यू डाला है यार? मेरे को आप कौन से चैनल पे डालते हो मेरे को जरा बताना, मैं भी चेक करूँगा। आई वुड लाइक टू सी दैट। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा हूँ सबका भाई। भाई सही है भाई, आपको मज़ा आता है मतलब मूवीज़ देखने में, अच्छी बात है। गन एंड मैट्रिक्स का प्रोडक्शन पर है वो फिल्म। अच्छा, अब मैट रीव्स तो पता है मुझे। जेम्स गन तो वो भी कर रहा है ना, सुपरमैन बना रहा फिर से एक और, सेकंड शायद बना रहा होगा। मैं तो खैर फर्स्ट भी नहीं देखी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उतना। मतलब हाइप थी उस मूवी के, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था उतना देखने में भाई। ऊपर से ये लोग ये दिसंबर में अब 2 मूवी और आ रही है, ड्यून 3 और डूम्सडे। डूम्सडे भी साला ये भी नॉस्टैल्जिया बेटी रहेगी भाई। कुछ वो तगड़ी राइटिंग वाली हो तो मजा है। टॉक्सिक देखोगे ना? टॉक्सिक में मेरा इंटरेस्ट नहीं, टॉक्सिक वगैरह नहीं देखता वो सब वैसी टाइप की। बस आईमैक्स की कमी है साला, होना चाहिए था यार, सब जगह है ही नहीं आईमैक्स भाई। मेरे यहाँ प्रयागराज में तो वैसे ही नहीं होता भाई, प्रयागराज में तो वैसे ही नहीं है। वो तो पीक होगी इस बार, कमबैक आएगा, देखते हैं यार। आई होप कि भाई डूम्सडे भाई मतलब ऐसा ना लगे ना कि सिर्फ पुराने कैरेक्टर्स की वजह से चल रही है, मतलब कुछ वो लगे ना कि हाँ राइटिंग कुछ तगड़ी मिल जाए एकदम। बस मतलब मार्वल का एक्चुअल में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट फील हो, रादर देन कैमियो वाला। नेक्स्ट डे तो रामायण जाऊंगा प्लस डूम्सडे। हाँ रामायण भी आ रही है, मैं तो नहीं देखूंगा। आप कौन सी मूवी नहीं देखने वाले? टॉक्सिक नहीं देखोगे या और कोई? कुछ राइटिंग तगड़ी नहीं मिलेगी, बिग हीरोज यूनाइट होंगे और क्या यार। पता है ये लोग वही करते हैं यार भाई, इन लोग का एंड गेम के बाद से यही चल रहा है, बस कैमियो लाके कैमियो ले आओ और ऑडियंस देख लेगी। नो वे होम भाई देखो, नो वे होम बहुत बढ़िया मूवी थी, मज़ा आया था देखने में, बट वो मूवी वन टाइम वॉच है भाई। वो बहुत तगड़ी रिटर्न स्टोरी नहीं है उसकी, वो मतलब पूरी प्रिडिक्टेबल मूवी है। वो सिर्फ मतलब फेस्टिवल की तरह था भाई, कि मतलब एक बार देख लिया, सेलिब्रेट कर लिया। और वो वैसी कोई टाइमलेस मूवी नहीं है नो वे होम की, मतलब बार बार देख सको। वो टाइमलेस मास्टरपीस नहीं बन रहा है आजकल। मैंने सिर्फ अपने रिव्यू में बोला कि ब्रांड न्यू डे जो है ना, वो टॉम हॉलैंड की एक्चुअल में बेटर मूवी है भाई नो वे होम से। उसको तुम एक से ज़्यादा बार एटलीस्ट देख सकते हो भाई। तेरा स्टार है देखा भाई, मेरा स्टार है मतलब। अच्छा मूवी की नाम, मूवी का नाम है क्या कोई? नहीं मेरे को नहीं पता। एक्शन ज़्यादा होगी बस और क्या। इवन इन द कॉमिक्स मार्वल डज नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ एवेंजर स्टोरी, देयर सोलो रन इज ग्रेट। ओके भाई, मेरे को तो अभी भी याद है ना जब नो वे होम एंड हुई थी ना, लोग क्या 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 वो कर रहे थे कि स्पाइडरमैन में की नेक्स्ट मूवी में वो पीटर पार्कर और वेनम का मीटअप होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अपना जो वेनम है भाई टॉम हार्डी वाला वो जा चुका है। एवेंजर्स के रन बहुत पहले डिसेंट थे कॉमिक्स में, अब इवन मूवीज पे भी उतना इम्पैक्ट नहीं है। मुझे तो लग रहा है आयरन मैन का कमबैक ना करा दे लोग किसी और यूनिवर्स वाला भाई। पता चला भाई आरडीजी से 2 रोल करवा दिए भाई। पहले उसका डॉक्टर डूम, पहले उसका डॉक्टर डूम आएगा स्क्रीन पे, फिर उसी की शक्ल का आयरन मैन भी आएगा। पता नहीं भाई लोगों को पता है कि इन लोगों से नई नई मूवीज बहुत अच्छी नहीं बन रही है,
तो पुराने पे ही चल रहा है भाई। मार्वल ने जिन लोगों का करियर बनाया ना, अब वो लोग मार्वल का करियर संभाल रहे हैं। कमबैक नहीं होगा, रिबूट होगा। एक्समैन का न्यू कास्ट आ रहा है सून, एवेंजर्स भी रिकास्ट। एक्समैन के न्यू कास्ट में कौन कौन सा एक्टर होंगे? मतलब वुल्वरीन कौन प्ले करेगा भाई? तेलुगु मूवी देखते हो ना भाई? मैं नहीं देखता वो तेलुगु या तमिल मूवी। यार मैं पता है हिंदी फिल्म्स नहीं देखता ज़्यादा, बहुत कम देखता मैं। मेरे को एक्चुअली में मूवीज़ वगैरह के मामले में थोड़ा बाहर का ही ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को हॉलीवुड का कंटेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। इंडियन सिनेमाज में मेरा कम इंटरेस्ट है। तुम शायद यकीन नहीं करोगे, मैंने आज तक केजीएफ, बाहुबली, आरआरआर, ये सब मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ कंसिडर की जाती है, मतलब लोग बहुत तारीफ करते हैं इन सबकी, ये आज तक नहीं देखी मैंने। बहुत बंदों ने भी सजेस्ट किया कि देखो बहुत फन है, बट बहुत साल मतलब मैंने सुना ही, लेकिन मेरा कभी मन नहीं किया पर्सनली देखने का। अनाउंस नहीं कोई ऑफिशियल एक्टर पे रखते हैं। जीन ग्रे तो मिल गई एक्समैन के लिए, अब बाकी देख लो कौन कौन आता है। हाँ जीन ग्रे आ गए भाई एमी। बट मैग्नीटो के लिए भी एक्टर रिवील हुआ, रेमा फ्रॉस्ट भी। बाकी अपना भाई घोस्ट राइडर तो आ ही गया फाइनली। लोग कह रहे थे इतने साल से घोस्ट राइडर दे दो, आ गया वो भी। भाई मार्वल का तो चलो समझ आ रहा है कि इन लोगों के पास दुनिया भर के प्लान है। डीसी का क्या है भाई? कोई डीसी का बताएगा? डीसी का बैटमैन 2 ही का वेट चल रहा है भाई। भाई बैटमैन 2 जिन लोगों ने 2022 में देखी थी, वो 26 में 6 साल, मतलब 28 में 6 साल बाद देखेंगे भाई। 6 साल बहुत बड़ा बड़ा पीरियड होता है भाई, मतलब अगली मूवी आने में 6 साल लिटरली। जीन ग्रे तो मिड लगे ब्रांड वीडियो में, कॉमिक्स पे बेकार कैरेक्टर थे और इसमें तो डिसेंट लगा। अच्छा तो क्या, मैं जाता हूँ सोने। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। डीसी का सुपरमैन एंड 2 ही टीवी शो आ रहे। टीवी शो मैंने एक देखा था इनका, पेंगुइन, वो बहुत अच्छा शो था। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। मतलब बैटमैन यूनिवर्स का भाई वो, मतलब मूवी तो थी ही सही, बट वो शो मुझे मूवी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब उस शो में लिटरली उन लोगों ने पेंगुइन के कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया। ये नहीं किया कि भाई बंदा विलेन है तो उसके लिए थोड़ा सिंपैथी फील करा दो ये वो। मतलब थ्रू आउट द शो हम लोग पेंगुइन का ही साथ दे रहे थे। मेरे को तो मैं शो देख रहा था ना, तो मतलब फील आ रहा था कि हाँ पेंगुइन ही जीतेगा, लेकिन कभी ये फील भी नहीं आया मुझे कि ये पेंगुइन बुरा है। मतलब ये था कि ये बुरा है, लेकिन इतना भी वो नहीं लगा कि इसको हरवाओ, इसको मारो साले को। लेकिन जब वो शो एंड हुआ ना, जब पेंगुइन ने करा भाई विक्टर के साथ कांड, वहाँ से भाई बैटमैन 2 का इंतजार शुरू हो गया कि ये गांडू को वहाँ शो दूंगा नेक्स्ट फिल्म में। गांडू है साला। वो मैट रीव्स का यूनिवर्स है, गन का अलग जाएगा। हाँ गन का अपना अलग है, मैट रीव्स का अपना अलग है। भाई बैटमैन 2 जिस साल आएगी भाई, मैं उस समय 22 का होने वाला हूँगा भाई। गांडू ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया डीले, क्योंकि जब बैटमैन 2022 आई थी ना, उस टाइम मैं 15 का था, 16 का होने वाला था। बैटमैन जिस साल आएगी तब मेरी शादी होगी। और तुम्हारी, अबे हाँ तुम्हारी तो एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब तक। और तुम्हारी तो हाँ आई थिंक तुम्हारी तो, तुम तो वैसे भी आई थिंक कितने के हो अभी? आई थिंक 21 के हो ना तुम, तो वैसे अवेलेबल हो ही। बट वो जब तक आएगी तब तक तुम्हारा मतलब वो नॉर्मल एज होती है कि नॉर्मली उस एज में लोगों की शादी हो ही जाती। और जाऊँगा बाहर में ये देश छोड़ के। 22 के हो गए भाई, 22 के बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हारा पता परफेक्ट एज है ये, मतलब अभी अब परफेक्ट एज है। बाहर जाऊंगा देश छोड़ के। ओके ओके, सही है सही है। एज यू हैव द गोल्स, एज यू थिंक विच इज गुड फॉर यू, डू दैट। यार पता नहीं यार भाई, मैं तो आगे का मुझे पता ही नहीं आगे क्या होगा। मैं अगले साल 21 का हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं क्या होगा अगले साल तक भाई। मेरी एक टाइम आएगा मेरा भी, जब मैं शायद स्ट्रीमिंग वगैरह ना कर रहा हूँ, फिर मेरा चैनल डेड हो जाएगा एकदम। अब वैसे डेड तो अभी भी है,
लेकिन फिर डेली डेली जो मैं स्ट्रीम्स करता हूँ वो बंद हो जाएंगी एकदम, जिंदगी एकदम नॉर्मल सी हो जाएगी। मेरा मेंटालिटी धीरे धीरे चेंज हो रहा है एज एवरीवन। अरे भाई वो होता ही है यार, सबका होता है, हर साल चेंज होता है भाई। अभी मैं 2024 में जो बंदा था ना, मतलब 2024 जुलाई अगस्त के टाइम में जो इंसान था, वो अभी मैं 2026 अगस्त के टाइम नहीं हूँ। मैं एकदम डिफरेंट आदमी हूँ। 2 साल में बहुत बदल गया है। सबका चेंज होता है, मेरा भी हुआ है। अभी आने वाले टाइम में तुम्हारा और होगा। मेरा हो सकता है जब मैं आपकी एज तक पहुंचूँ ना, 22 तक, मेरा बहुत चीज़ें बदल जाएं भाई। जिंदगी ऐसी ही है भाई, सब चेंज होता है समय के साथ। ये स्ट्रीमिंग भी बंद ही हो रही मेरी वैसे ही, जब से स्टार्ट किया पता नहीं, एक दिन कुछ करूँ। कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होता ही है, वो तो है। हाँ स्ट्रीमिंग तो बंद होती है यार, मेरी भी एक दिन हो ही जाएगी। मेरी तो भाई चालू भी बड़ी मुश्किल से हुई थी भाई। मतलब पहले मैं रेगुलर करता भी नहीं था, कभी कभार करता था दिन, मतलब जैसे 3-4 दिन में एक स्ट्रीम कर ली। मेरा वीडियोस पे फोकस रहता था उस टाइम। फिर समय के साथ रियलाइज़ हुआ ना कि यूट्यूब वगैरह पे गेमिंग वीडियोस डालना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। माँ तुम सोचो यार, तुम कोई गेम खेल रहे हो 10-15 घंटे की भी, तुम उसमें 30 मिनट की वीडियो डाल रहे हो वॉक थ्रू वाली, वो चीज़ें जो 2010 में लोग देखते थे, तुम 2022, 23, 26 में सब प्रोवाइड करना चाहते हो और सोच रहे हो कि तुम्हारी चैनल चल जाए। नहीं चलेगा। मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे गेमिंग पसंद है, तो मैं इसको लाइव स्ट्रीम पे डेडिकेट कर देता हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि स्ट्रीम पर एटलीस्ट लोग आ जाते हैं भाई। लोगों को अगर जैसे तुमको गेम नहीं भी देखना, तो भी तुम एटलीस्ट मुझसे बात करने आ जाओगे। लेकिन वीडियो का क्या है, वीडियो वही बंदा देखेगा ना जिसको उस वीडियो के गेम वाले टॉपिक में इंटरेस्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? कौन सी? इतने लंबे वॉक थ्रू डाल के कोई भी नहीं देखेगा। अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं देखता वो सब कंटेंट मतलब खत्म हो चुका है पूरी तरह अब। मतलब वो सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स डालते हैं ना, तो उनका उनका थोड़ा बहुत चांस है कि लोग देख लें। और उनका भी लोग इसलिए देखते हैं ना क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर हैं। नए बंदे का कोई नहीं देख रहा भाई कि भाई तुमने अनचार्टेड 4 का एपिसोड 1 डाल दिया, नेथन और सैम ये करने गए हैं, केसीडी का। भाई सोचो अगर मैं केसीडी जैसे गेम की वीडियोस डालता एपिसोड बाय एपिसोड की, एक वीडियो में एक मिशन कर रहा हूँ, एक वीडियो में एक साइड मिशन कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी वीडियो लग जाती खत्म करने में गेम। स्ट्रीम करके मैंने ढंग से कम खेल लिया गेम, इंजॉय करके। मेरे को भाई इसलिए मैंने वीडियो डालना छोड़ दिया भाई, बहुत अनोइंग चीज़ थी मेरे लिए, मज़ा नहीं आता था। वॉक थ्रू से ज़्यादा कोई बेस्ट क्लिप डाल दो विथ क्लेवर टाइटल, फिर आएगी पॉपुलर। वही तो, वॉक थ्रू कोई नहीं देखता 2026 में, लोग स्ट्रीम ही देखते हैं। और वैसे भी आज के टाइम में भाई, अब जैसे जैसे समय बीत रहा ना, मुझे पर्सनली लग रहा है ना आने वाले टाइम में गेमिंग चैनल्स वो हो जाएंगे एकदम। मतलब अब लोग बिल्कुल ही गेमिंग कंटेंट नहीं देखेंगे। मतलब लोग सिर्फ गेमिंग के नाम पे वही MKS एंड फायर टाइप का ही वो देखा करेंगे, बस क्लिक करते हैं। मतलब उनकी वीडियो को देखता तो कोई नहीं है। और वीडियो स्ट्रीम भी शायद लोग देखना बंद ही कर दें। लोग पता है गेमिंग में क्या देखना चाहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो गेम को लेकर। जैसे कि तुम रिव्यू देखना चाहते हैं गेम्स का, वो सिस्टम पीसी कैसे काम करता है ये देखना चाहते हैं। तुम क्रैक गेम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, सेल पर क्या गेम ले सकते हो। लोग की ये डिमांड है भाई गेमिंग में। लोग वो हिमांशु राणा और ब्रो स्टेशन जैसा कंटेंट बनाते हैं ना, उनके टाइप का कंटेंट डिमांडिंग है आज के टाइम में। ये सब का गया ज़माना भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में ईथन विंटर्स करेगा लूकस का तमाचा, रेजिडेंट इवल 7 पार्ट 6। वो सब गया भाई, इट्स ओवर, उसका एरा गया। और मैं कहूँगा ठीक ही है गया।
क्योंकि कुछ खास चीज थी नहीं भाई, वो हर क्रिएटर अच्छी बना भी नहीं पाता वो। या बीस्ट बॉय को मैं पहले देखता था बहुत भाई, वो अच्छी वीडियोस बनाता था इन सब पे। अब भाई उसकी वीडियोस देखने में मजा नहीं आता मुझे उतनी जितना पहले आता था। भाई पानी पी लिया, पानी खत्म हो गया यार। कमेंट्री चलती है थोड़ी है भाई, कमेंट्री भाई, गेम प्ले तो कमेंट्री बिल्कुल नहीं चलती, एडिटिंग चलती है। गेम प्ले पे तो एडिटिंग ही चलती है भाई, गेम प्ले पे सिर्फ। अगर मतलब मैं स्टोरी गेम्स की भी बात नहीं करूंगा, अगर तुम कोई नॉर्मल गेम भी खेल रहे हो ना, मानो मल्टीप्लेयर गेम के मोमेंट्स डाल रहे हो अच्छे वाले, तो वहाँ भी तुम्हें एडिटिंग वगैरह अच्छी चाहिए, बिना लोग एडिटिंग से इंगेज होंगे। बीबीएस तो इज लाइक कि तुम जब थोड़े अंडर डेवलप थे तब उसके वीडियो अच्छे लगते थे। उसके वीडियोस हाँ बचपन में ज़्यादा अच्छे थे भाई, मतलब हम लोग उस टाइम भाई कोई यूट्यूबर मिल गया था जो एंटरटेन कर रहा था। भाई तुम स्कूल से घर आ रहे हो, और तुम्हें हॉरर गेम खेलना पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें एक यूट्यूबर दिख गया जो हॉरर गेम इतना इंटरेस्टिंग वे में खेलता है, क्या तो हंसी आती है उसका प्ले थ्रू देख के। मैं तो तब देखता था जबकि न्यू टू लाइफ स्ट्रेंज चालू करी थी। मैंने उसको हॉरर गेम से ही ढूंढा था। उसका मेनली क्या बोलते हैं, कौन सा गेम था वो, एक हॉरर हॉस्पिटल खेल रहा था, उसमें मैं उसको उससे ढूंढा था, और तब से मैंने रेगुलर देखना चालू कर दिया। उसकी उसकी फिर मैंने काफ़ी गेम्स की सीरीज पूरी देखी है, जैसे रेसिडेंट इविल वगैरह, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाता था। लेकिन भाई टाइम के साथ साथ तो मुझे उसकी वीडियोस में इंटरेस्ट मेरा गिर सा गया भाई। अब तो उसकी वीडियो में देखता ही नहीं भाई, उसे सब्सक्राइब करके रखा है मैंने, क्योंकि भाई तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसको इंटरेस्ट रखता हूँ कि वह बंदा अच्छा कंटेंट क्रिएटर रहा है, इतने साल फॉलो किया उसको। वरना अब मेरे को एक्चुअली उसके कंटेंट में भी इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं उसकी जगह किसी स्ट्रीमर को देखना प्रेफर करता हूँ भाई, ये हैवी फ्यूरी हो गया, ब्लू हार्ट हो गया, कोई भी बस वैभव भाई जैसे स्ट्रीमर हो गए, उनके चैट में भाई तो बातें कर लो, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। भाई रात हो रही है, लेकिन भाई बातें रुक नहीं रही भाई, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। भाई साहब आई थिंक लगता है चैट में सब गायब है। अब मैं ऐसे ही खड़े होकर वेट कर रहा था, शायद कुछ लिख रहे हो। अगर कुछ नहीं लिख रहे तो बता देना, ठीक है, मैं फिर चलता। बातें भी हम लोगों ने कर ली, जस्ट चैटिंग भी कर ली। मेरा मन था थोड़ा कि यार गेम वेम खेलने के बाद बातें भी कर लो, क्योंकि गेम वगैरह तो खेलते ही हैं, बातें भी होनी चाहिए। एक एक मोमेंट इस गेम का याद रहेगा। गेमिंग इज नॉट डेड भाई, देयर आर स्टिल मेनी पैशनेट डेवलपर्स लेफ्ट, लाइक वॉर हॉर्स। गेमिंग विल नेवर डाई, यस, गेमिंग विल नेवर डाई। भाई वो कंज्यूमर्स की गलती है ना, कि वो लोग वही लोग गलत गेम्स को सिलेक्ट करते हैं, वही सेम कचड़ा उन्हें खेलना है। कंप्लेन भी करनी है कि भाई यूबीसॉफ्ट का गेम झाटू है, फिर वही उठाना भी है।
भाई कंप्लेन करके भी उठाना है, कंप्लेन भी करने की भाई कॉल ऑफ ड्यूटी इज डेड, कॉल ऑफ ड्यूटी के कैंपेन कचड़े हैं, पहले कितने अच्छे थे, फिर भी वही उठाना है 6000 में आके भी। अब जब गेम अच्छी बनाओगे तब चलेगी अच्छे से। वही अच्छे टाइप्स हैं यार, यूबीसॉफ्ट झाटू एक नंबर यस यस, वो यूबीसॉफ्ट हो गया, वो कॉल ऑफ ड्यूटी के डेव्स हो गए। अब भाई ये वो लोग जब बेकार गेम बना रहे हैं हर साल, तुम्हें दिख रहा है, तुम फिर भी भाई गाली देने के बाद भी खरीद रहे हो, और फिर गेम खरीद के बोल रहे हो गेम वो क्या ये वो। अब जब तुम्हें पता ही है बेकार है, काहे खरीद रहे हैं, वाई आर यू इवन बाइंग दैट शिट। फिर एक तरफ वो क्रिम्सन डेज, अरे यार किसका नाम ले लिया मैंने, क्रिम्सन डेजर्ट का तो अलग ही सीन है यार। अब उस गेम में मतलब चीज़ें बहुत डाल दी, लेकिन बहुत मतलब ये है ना कि तुमने सब कुछ हर चीज़ में मुंह मार लिया, लेकिन किसी एक चीज़ को तुम सही से मास्टर नहीं कर पाए। किसका नाम ले लिया, अब आ जाएगा वो भाई अभी कुछ दिन पहले ना मैंने तो क्रिम्सन की बजा दी थी यहाँ पे ऐसे ही बात करते करते कि यार मतलब वो गेम में यार इतना कंटेंट डाल दिया डेव्स ने, मैं देख रहा हूँ, मतलब इतना कंटेंट डाल दिया तुमने, इतना सारा चीज़ें डाल दी, लेकिन क्वालिटी नहीं है किसी में भाई। इट लैक्स क्वालिटी, इट लैक्स सोल, इट लैक्स पैशन। उसमें मतलब भर दिया है बस तुमने कि भाई हमने बस घंटों का 200 घंटे का 300 घंटे का गेम बना दिया। उनका शायद मोटिव ही जैसे था कि भाई हमें गेम ही इतना बड़ा बनाना है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया भाई कि भाई तुम देखो यार, एक लीनियर गेम ना, अगर तुम एक लीनियर गेम खेल रहे हो ना जिसमें स्टोरी कुछ खास नहीं है लेकिन उसका गेम प्ले अच्छा है, लोग खेल लेंगे। बट अगर तुम एक ओपन वर्ल्ड आरपीजी बना रहे हो ना तो उसमें स्टोरी चाहिए ऑडियंस को, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं। वही भाई तुम ओपन वर्ल्ड गेम बना रहे हो ना, देखो क्रिम्सन चलो आरपीजी है भी नहीं, उन्होंने कह दिया, लेकिन तुम अगर इतना बड़ा ओपन वर्ल्ड गेम बना रहे हो ना, तो अगर कोई चीज़ बंदों को इंगेज रखेगी ना 200 घंटे, तो वो उसकी कहीं ना कोई स्टोरी है। अगर उसकी स्टोरी में ही वो दम नहीं है ना तो ज़्यादातर लोग ड्रॉप करेंगे ही। मैं तो जब KCD1 जब खेल रहा था, मेरे को कई लोगों ने पूछा था कि आप क्रिम्सन खेलोगे क्या, आ रही है, मैंने कहा ना मेरा इंटरेस्ट नहीं भाई, मैं KCD में ही लगाऊं। और भाई वो दिख गया मुझे उस गेम में भाई। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एज समवन हु प्लेड अ लॉट ऑफ आरपीजी, एक मिनट ये हार्ट आ गया, आरपीजी इट्स द फर्स्ट गेम दैट लैक्स एवरीथिंग, स्टोरी एंड लेस इमर्सिव देन, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो गेम सोल स्टोरी लैक करती है बहुत। आरपीजी गेम्स का मेन मोटिव ही होता है भाई एक अच्छी स्टोरी, अच्छा गेम प्ले, अच्छा रोल प्लेइंग। भाई सिर्फ ये नहीं कि तुमने गेम प्ले और ग्राफिक्स कर दिए हो गया और सेम क्वेस्ट रिपीट कर रहे हो, वो भाई मतलब क्वेस्ट को मतलब वो ट्रीटमेंट नहीं मिला उस गेम को अच्छा भाई, दैट्स इट। अच्छा मैं खुश हूँ भाई कि वो गेम मैंने नहीं खरीदा भाई, बहुत हाइप थी उस गेम की एक्चुअली में, लोग एकदम पागल थे भाई कि भाई क्रिम्सन आ रहा है, RDR2, KCD, विचर 3, असैसिन्स क्रीड वाला सबका किलर, क्या क्या बोल रहे थे लोग। सिर्फ गेम प्ले होता तो सारे आरपीजी चल नहीं पाते, ये बताओ। वही तो भाई गेम प्ले सारी आरपीजी में होता है, बट मेन जो आरपीजी गेम्स को मतलब स्टैंड आउट कराती है ना चीज़, वो उसका कैरेक्टर जर्नी रहती है, चाहे तुम खुद का कैरेक्टर बनाओ या वो एक प्री रिटन कैरेक्टर हो। अगर वो सोल ही नहीं है गेम में भाई, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा खेलने में। लीनियर गेम्स क्या है ना, बिना स्टोरी के चल सकते फिर भी, कई सारे मतलब कि बस नॉर्मल सी स्टोरी, बट गेम प्ले अगर बहुत अच्छा है लीनियर गेम टाइम नहीं मांगते हैं ना ज़्यादा, बट जो गेम टाइम मांगता है एक प्लेयर का आवर्स मांगता है, वहाँ तुम्हें देनी पड़ेगी कुछ, कहीं से तो देनी पड़ेगी स्टोरी, या कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा कि लोग बार बार खेलने में इंटरेस्ट दिखाएं। वो गेम का भाई वो चीज़, वो गेम वही तो लैक कर रहा था, दिख रहा था उसमें पहले से दिख रहा था। पहले मुझे लगा था कि शायद अच्छी गेम हो सकती है, लेकिन वो जब रिलीज के क्लोज आ रही थी ना, दिख रहा था उसमें कमियां। यार अब पता है, इससे मेरे को याद है, मेरे को साइबर पंक की DLC भी खेलनी है। ये RT भाई मजाक करते हैं क्या, या ऐसे ही बस, क्या किस पे मजाक करते? अगर मतलब गेम्स की बातों पे कर रहे हो तो यार वो तो मजाक ही करते हो, रोल प्ले करते हैं भाई बस,
वो सिर्फ चैट में इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए रोल प्ले करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है भाई उनका कि उन्हें सच में नफरत है गेम से। द क्रिम्सन ग्लेजिंग यार मेरे को तो पता है, मेरे को तो ऑनेस्टली लगता है ना कि वो मजा वो देखो क्रिम्सन डेजर्ट की बात रही ना, मेरे को लगता है उन्हें क्रिम्सन में मजा आया है एटलीस्ट, मतलब गेम प्ले के मामले में गेम क्योंकि है ठीक, तो उन्होंने गेम प्ले के मामले में तो इन्जॉय कर लिया वो गेम। बट वो उनका मैंने जब रियल वो उनसे उनसे पूछा गया ना जब कि भाई वो आपका रिक्वेस्ट क्या कहना, उन्होंने कहा साइड कोर्स इतनी खास वास नहीं है, बस कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है ना वो जो ग्लेजिंग वाला या वो चलता है ना, वो सिर्फ इसलिए कि चैट में थोड़ा टाइम पास के लिए, चैट में थोड़ा लोगों को बैठाओ और थोड़ा बातें बातें करो, बढ़ाओ चैट की इंगेजमेंट बढ़ाओ, उसके लिए करते। अब वो तो मुझे पता है, वो मैं भी करता हूँ तो लाइटविंग भाई का भी सेम है भाई, लाइटविंग भाई का भी सेम है, वो पूरा रोल प्ले करते हैं चैट में आके भाई क्रिम्सन डेजर्ट की तारीफ करने का, सपोर्टर बनने का, वरना अंदर ही अंदर भाई जब उन्होंने तो क्रिम्सन बोल दिया तब कि भाई ये गेम में दम है ही नहीं, उन्होंने बोल दिया था पहले ही, वो चैट में सब रोल प्ले ही करते हैं वो भी आके। हेलो अनिकेत भाई वेलकम, क्या हाल है? मेरा कंप्लीट हो गया है गेम भाई, इंक्लूडिंग द लास्ट डीएलसी। ये मेरी लास्ट स्ट्रीम थी भाई केसीडी की। इट्स ओवर, इट इज़ ओवर मैन, द जर्नी इज फिनिश्ड। इस साल की भाई बड़ी जर्नी समाप्त हुई मेरी भाई। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा सच में क्रिम्सन की ग्लेजिंग कर रहा है ना सीरियस नोट पे, तो भाई उसको भाई उसको अपने गेमिंग टेस्ट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्रिम्सन जैसे गेम की अगर तुम सीरियसली ग्लेजिंग कर रहे हो तो भाई वो नहीं, मतलब बहुत बढ़िया गेम है, देन देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। मेरा तो क्रिम्सन जैसे गेम में रोल प्ले नहीं रहेगा, पर बंदा सही है। यस यस बिल्कुल एग्रीड भाई। क्रिम्सन का भाई एक मजा तो आया क्रिम्सन डेजर्ट का कि भाई आरटी भाई को ट्रोल करने का बहुत मौका मिला, और डार्क सोल में वो मजा नहीं आ रहा, ट्रोल करने का मन नहीं कर रहा उसमें। क्रिम्सन में तो भाई क्रिम्सन के नाम पे मैंने, तुमने, काजुमा ने, सबने जो भाई मारी है ना क्रिम्सन की इतनी गंदी वाली, उसे बकचोदी करने में ज़्यादा ही मज़ा आता है मेरी तरह। हाँ भाई वो बकचोदी करते हैं और क्या, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग गेम से सच में नफरत है, वो रोल प्ले करते हैं हम लोग। मैं ढूंढता हूँ ट्रोल करने का कर नहीं पाता यार। पता है वो क्रिम्सन का एरा ही अलग था यार, वो क्रिम्सन ट्रोलिंग वाला, वो अब दोबारा कभी नहीं आएगा वैसे शायद, अनलेस कि स्टॉकर लाइव स्ट्रीम कर दे। स्टॉकर ले आया ना आरटी भाई, मैं फिर मजा आएगा भाई रोल प्ले करने में चैट में। स्टॉकर ही करवा सकता है अगला, क्योंकि पूरे आईजीसी में अकेले वही है भाई जो स्टॉकर खेलने वाले। उसके हर क्रिम्सन पे मैं इतना हाँ भाई, जो हर क्रिम्सन स्ट्रीम में आके भाई ये क्या क्रिम्सन स्लॉप खेल रहे हो, आई वांट टू स्मैश यू लाइक दिस शिट गेम, क्या क्या लिखते थे भाई, मजा आ जाता था भाई पढ़ पढ़ के। आरटी की क्रिम्सन स्ट्रीम बैठ बैठ के देखी है पूरी भाई। क्रिम्सन की तो भाई उसने ही मार ली थी, याद हो पीनट प्लेज ने, उसका मेरे को लग ही रहा था उसको नहीं पसंद आएगी गेम भाई। वो ओपन वर्ल्ड गेम्स आरपीजी वाले उसके टाइप के नहीं है भाई। उसने एल्डन रिंग भले ही खेला है, लेकिन वो एल्डन रिंग और साइबर पंक की बस उसके वो केसेस है। विचर भी उसका इतना उसे पसंद नहीं आया था, उसने रश ही कर दिया था पूरा गेम। केसीडी तो उसने खैर खेला नहीं है, आई थिंक कि शायद उसे शायद ना पसंद है, बहुत ज़्यादा स्लो गेम है क्योंकि उसका मुझे लग ही रहा था क्रिम्सन उसे नहीं पसंद आएगा। उसने तो क्रिम्सन की बैंड बजा दी भाई गेम खरीदने के बाद। था मैं प्राइम टाइम उसने भी चेंज कर दी क्रिम्सन पे तो भाई, मतलब उसने भाई आवर्स दिए अपने, लेकिन भाई उसने जो बताया ना सच ही बताया। क्रेडिट्स ने 520 ट्रैक किया था, अच्छी लगी है उसे, आई नो फॉर वन रीज़न। हाँ भाई वही लड़की की वजह से लगी होगी और क्या भाई। मेरे को तो लॉन्डे चाहिए गेम में भाई, तगड़े वाले, तगड़े मतलब मेमोरेबल प्रोटैगनिस्ट होने चाहिए भाई। हेनरी तो मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में ना गेमिंग का मोस्ट रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हेनरी से ज़्यादा रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट मैंने नहीं देखा भाई गेमिंग में। मतलब सारे प्रोटैगनिस्ट ना थोड़े अपने आप में रिटर्न होते हैं, उनके मोरल वैल्यूज़ भी रिटर्न रहती हैं,
हेनरी की तुम ना मोरल वैल्यूज चेंज कर सकते हो गेम में भाई। तुम उसको मास मर्डरर भी बना सकते हो, तुम उसको एकदम ऑनरेबल नाइट भी बना सकते हो, तुम उसको एंटी हीरो टाइप का रोल भी दे सकते कि बंदा थोड़े बहुत गलत काम कर सकता है बट फॉर द ग्रेटर गुड। रिट्टी भैया वर्सेस क्रेडनेट भाई, वो दोनों अगर आ गए ना बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि दोनों में एक एबिलिटी है भाई, दोनों किसी और की नहीं सुनेंगे भाई, दोनों किसी और की नहीं सुनेंगे, दोनों सीधे भाई, दोनों कहेंगे। क्रेडनेट्स की तो एबिलिटी है भाई वो अंकलों से भिड़ने की भाई, वो तो भाई वो एजिटेट नहीं करता बड़े लोगों से भिड़ने में। और आरटीवाई का तो क्या है, आरटीवाई की भी हिस्ट्री है भाई, बच्चों से बार बार भाई बातें करने की, रोल प्ले करने में। उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक होगी। हेनरी तो भाई बेस्ट, बहुत ज़्यादा भाई। हेनरी जैसा प्रोटैगनिस्ट यार अब किसी गेम में मुझे को नहीं लगता मिलेगा। लाइक आर्थर मॉर्गन, निको बेलिक, ये सब, या गेराल्ट, ये सब प्रोटैगनिस्ट एटलीस्ट ना इनका लगता है देख के ना कि ये ऑलरेडी रिटर्न है, मतलब इनके मोरल वैल्यूज ऑलरेडी डिसाइडेड है। इवन विचर में भी कितना भी तुम चॉइसेस इधर उधर की ले लो, गेराल्ट ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश्ड कैरेक्टर लगता है कि जिसकी मॉरल वैल्यूज ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हेनरी एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिसको जो पूरा पर्सनल है, कि तुम उसको अपनी रियल पर्सनैलिटी से जोड़ के खेल सकते हो, सिर्फ वही एक है। कैरनट्स तो बेचारा डर गया था बस वैसे। अब मैं भाई वो तुम्हारा रोल प्ले नहीं समझ पाया भाई, तुम वो बैंग लिख रहे थे ना, वो नहीं समझ पाया तुम्हारा रोल प्ले। वो थोड़ा भाई वो थोड़ा वो शायद सोशल मीडिया चलाता है, लेकिन वो रोल प्ले या ये सब चीज़ों को समझ नहीं पाता अच्छे से। वो इन सब चीज़ों को थोड़ा कम समझता है भाई, ये रोल प्ले ये वो। उसके लिए तुम्हें मतलब वो तुमको जानता भी नहीं है ना ज़्यादा अच्छे से। अब मैं तो तुमको जानता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे हो, वो पता है रोल प्ले कर रहे हो, वो नहीं जानता है। और तुम किसी भी नॉर्मल स्ट्रीमर के यहाँ जाओगे ना, मतलब जो तुमको जानता ही नहीं हो, वो भाई तुम्हारा मैसेज देख के डर जाएगा कि भाई ये कौन आ गया, ये क्या हरकत है, पूरा मतलब ट्रॉमेटाइज कर दिया। और ट्रॉमेटाइज से याद आया भाई, वो टफ की स्ट्रीम पे जब हम लोग का हुआ था ना पहली बार वहाँ पे, मेरे को याद है टफ की स्ट्रीम पर ही तो हम लोग का शुरू हुआ था वो वाला बैंटर आपस में। हम लोग मतलब जानते थे एक दूसरे को, उससे थे टपरी में भी मिले थे, स्ट्रीट साइड के यहाँ भी मिलते थे, लेकिन वो जो टफ के यहाँ जब हुआ था ना वो वाला ऑन टॉप ऑफ वाला आर्क, वहाँ से ही सब शुरू हुआ था ये वाला रोल प्ले। फिर भी कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ बकचोद वाले लोग ने, हाँ बकचोद लोग ही समझ सकते हैं भाई, नॉर्मल लोग नहीं। टफ का क्या सीन हुआ वैसे? टफ का क्या, टफ तो करता ही है स्ट्रीम रोज, और तो रोज ही आता है लाइव, जब भी शाम को आता तो है। टफ का तो भाई मजा ही आया था, टफ के स्ट्रीम पे सारे रोल प्लेयर थे। हाँ ये सही बोले, वो टफ खुद ही रोल प्लेयर है सबसे बड़ा, उसके शॉर्ट्स देखो भाई, वो आईटी पे जो डालता है भाई, वो बहुत, उसके चैनल पे सारे रोल प्ले करने वाले बंदे हैं। उसकी चैट पे कोई सीरियस बात नहीं करता भाई, सारे के सारे अलग लेवल पे हैं। यार पता है टफ से आता है पत्थर, उसकी चैट में आता है ना पत्थर यार, पहले मेरी स्ट्रीम पे आता था भाई रेगुलर, पिछले साल आता था, मतलब मेरी हर स्ट्रीम पे भाई, मेरे को याद है पत्थर के बारे में, मैं उसके बात करने में बड़ा मज़ा आता था, बड़ा बढ़िया व्यूअर था। अब आता ही नहीं भाई, बहुत टाइम से नहीं आया, आई थिंक लास्ट ईयर आया था बस एक किसी महीने में, बाकी उससे मेरी बात ही नहीं हो पाती भाई। पत्थर बड़ा सही बंदा था। टफ तो को भी बेचारा है, उसको भी दे दिया, क्या दे दिया, पत्थर तो एक्टर व्यूअर, हाँ वो एक्टिव व्यूअर है, लेकिन मेरी चैट पे अब नहीं आता भाई, मेरे पे भी एक टाइम एक्टिव व्यूअर था। तो पता है पत्थर का रियल नेम क्या था, एंडीसाइड था उसका एक्चुअल नेम। स्प्लिटर्स आया मेरी चैट पे, और वो एंडीसाइड उसकी प्रोफाइल में कोई पत्थर रॉक बनी हुई थी, तो स्प्लिटर्स ने उसको बोला कि अपना नाम पत्थर लिख दो, तो भाई उसने वो एंडीसाइड ने सच में अपना नाम पत्थर ही कर दिया, और तब से उसका नाम पत्थर बन गया। मतलब उसने स्प्लिटर्स के कहने पे अपना नाम सही में चेंज कर दिया, बिना पूछे कि क्यों चेंज करवा रहे, वो बंदा सही में चेंज कर दिया। पत्थर आई लव वैरायटी के वीडियो पे दिखा था एक शॉर्ट में। हाँ मतलब वो जानता सबको है भाई इधर, मतलब वो जानता हम सभी को है, बट मतलब
रेगुलरली तो मैंने उसको वहीं देखा है भाई, टफ के यहाँ ही। मेरे को उस बीच में आई थिंक फ्यूरी के यहाँ दिखा था। बाकी एक टाइम जब मेरे यहाँ आता था तो मुझे याद है भाई, मजा आता था उससे बात करने में। पत्थर बढ़िया बंदा है। भाई बीस्ट बॉय तो ब्लैक फ्लैग रेसिंग में लगा है। मुझे टफ का एक व्यूअर सनरे बी के स्ट्रीम पे दिख रहा था आज। सुन रहे, हाँ मैं जानता हूँ उसको, वो यू तो थोड़ा बड़ा यूट्यूबर है ना। मैंने सुना उसके बारे में, देखा भी आई थिंक उसकी कोई वीडियो देखी थी उसके। आई थिंक दो दो चैनल्स हैं उसके, दो चैनल है, एक गेमिंग वाला है, एक कोई अलग कंटेंट बनाता है इस पे। बड़ा उतना नहीं है, मॉड हुआ था करता था मैं उसका। अभी हो क्या मॉड? अब मेरे को तो पता है एक यूट्यूबर ने गलती से मॉड मॉड बना दिया था, लेकिन फिर मैं परमानेंट मॉड ही बन गया उनका। वो द्रोग बाबा जो है ना, वो द्रोग बाबा जो फुटबॉल का कंटेंट बनाते, तो उनका उनका एक और चैनल है क्रिकेट विद बाबा। तो उसमें वो गेम की स्ट्रीम कर रहे थे, इंडिया इंग्लैंड की क्रिकेट 24 मैच। तो वहाँ मैंने लिखा कि पिन दिस कमेंट डोंट हिट सिक्स। ये भाई पिछली बार जब उन्होंने मैच खेला था ना, हर बॉल पे वो सिक्स मारने जा रहे थे और आउट हो रहे थे। उन्होंने पिन करते करते मेरे को मॉडी बना दिया। अब तो थोड़ी हूँ, बस लोग मुझे जानते हैं। अब तो ये छोड़ गया। एड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ डिस्कॉर्ड मॉड इन डिस्कॉर्ड लॉल। भाई डिस्कॉर्ड मॉड बाप रे भाई, सबसे बड़ा मुश्किल काम, दुनिया का सबसे मुश्किल काम भाई डिस्कॉर्ड मॉड होना। नॉट वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट। नहीं है, नहीं है भाई। ये मॉडरेटर आई थिंक उतना ही बेकार होगा ना जितना क्लास मॉनिटर बनना होगा। एक क्रिएटर का ट्रस्ट कितना ही जीत लेगा। अरे यार मेरे को पता है मॉडरेटर और ये क्या बोलते हैं मॉनिटर कुछ नहीं पसंद भाई। बचपन में लगता था ना क्लास मॉनिटर बनना बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, क्या लाइफ होगी भाई मॉनिटर बनने के बाद के। घर वाले प्राउड फील करेंगे कि देखो टीचर ने मॉनिटर बना दिया इस मेरे बच्चे को, ये कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। मॉनिटर बन के दिख गए इसलिए तो भाई, एकदम सबसे झाटू चीज़ होती है क्लास मॉनिटर बनना। भाई जो चीज़ बाहर से अच्छी लगती है ना, मोस्ट ऑफ देम बेकारी होती है। कुछ ही चीज़ें होती है जो बाहर से अच्छी लगने के बाद भी अंदर से अच्छी हो, जैसे तुम्हारे पास पैसे हो बहुत ज़्यादा। मतलब अगर तुम्हारा तुम्हारा डिज़ायर है कि तुम्हें बहुत पैसा चाहिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट मोस्ट ऑफ द डिज़ायर्स जो होते हैं ना तुम्हारे, वो हटिया ही होते हैं। ये डैंक ऋषि और सनवे से बात की थी मैंने, वही सही टाइम रहेगा। और डैंक ऋषु उसको मैं भी जानता हूँ, सुना था मैं लोगों का नाम यार, मतलब डैंक ऋषु का नाम तो बहुत पहले सुना था, लाइक लॉकडाउन के टाइम पे शायद सुना था उसके बारे में। अरे तो बड़े क्रिएटर्स को मैं फॉलो ही नहीं करता भाई कोई भी। बीस्ट बॉय बस सब है। एक बंदे को फॉलो करता था इतना इंटरेस्ट के साथ, वो भाई दुनिया छोड़ के चला गया। उसकी बस वीडियोस देखता रहता हूँ बैठ के आराम से। एंग्री रैंट मैन, यस। अब वो लेजेंड था भाई, उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मतलब वो अभी भी लगता है ना कि मतलब जैसे उसके रिव्यूज बस आ रहे हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। मतलब मैं इमेजिन करता हूँ कि उसके क्या रिव्यू होते हैं भाई। इतनी सारी मूवीज जो आई इस बीच, इतने सारे मैचेस हुए। एक टाइम था हरामी था ज़्यादा, अब चेंज हूँ। अरे भाई मैं एक टाइम बहुत चूतिया था भाई, मैं क्या बताऊँ। एक टाइम में इतना चूतिया था ना कि मैं अपने अगर मेरे को टाइम मशीन का मौका मिल गया ना बनाने का, मैं अपने पुराने वाले वर्जन को थप्पड़ मारूंगा कि भूसड़ी की हरकत मत कर देना। एकदम मैं बहुत चूतिया था। कितने इतने गधों वाले काम किए ना, इतनी फालतू जगह मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की है, इतना ओवर थिंक किया है, कोई मतलब नहीं था जिसका। ये
ये नई गेम एक और आई है मार्केट में भाई, बीस्ट ऑफ रीइंकार्नेशन। क्या यार, रोज कोई ना कोई गेम आ ही रही है। मैं भी मारता, यस। पुराने वाले वर्जन वाज मी लाइक रिक ग्राइम्स इन मर्डर जैकेट, प्राइम रिक ग्राइम्स। वो स्लॉप है, बीसी सेकिरो ही बना दिया वो गेम भाई। स्लॉप गेम है भाई, एक जस्ट अनदर स्लॉप जो ज़्यादातर स्ट्रीमर्स डे वन खेलेंगे और फिर कहेंगे कि भाई बिल ड्रॉप, फिर मतलब गेम कंप्लीट कर देंगे और बस। भाई मेरे को यार पता है ये चीज़ पसंद नहीं है भाई, जब लोग ज़बरदस्ती नए नए गेम्स खेलते हैं। अब मैं देखो बड़े क्रिएटर्स को नहीं बोलूँगा जिनको पैसा मिलता है गेम्स खेलने का, जिनका काम है, लेकिन जो नॉर्मल है ना स्ट्रीमर, जब वो लोग भी ये करते हैं ना, मेरे को सही नहीं लगता वो। क्योंकि भाई वो लोग, पता है वो लोग अपना पैसा लगा के गेम खरीदते हैं, या वो ऑडियंस क्या बोलते हैं जो पैसे देती है उससे खरीदते हैं, वो इतना बेकार गेम खरीदते हैं, ना उन्हें मज़ा आता है ना ऑडियंस को मज़ा आता है। वो बढ़िया गेम लोग ये सब केसीडी वेसीडी छोड़ के क्या खेल रहे हैं पता नहीं, वो लोग मजबूरन है भाई। फिर भी यार तुम मजबूरी में आके 5-5 6-6 हज़ार की नई नई गेमें खरीद रहे हो, वो भी ऐसी जो तुम्हें पसंद नहीं है। बड़े क्रिएटर्स की तो कोई दिक्कत नहीं यार, उनका तो जॉब है काम करना, उनका काम है भाई, उन्हें हर गेम खेलनी पड़ेगी। ये जिनका नहीं है वो लोग भी यही कर रहे हैं। मैं बड़े क्रिएटर्स को अभी नहीं बोलूँगा कि भाई कि तूने केसीडी 2 200 घंटे क्यों नहीं खेली। ये लोग वही हैं जो सिल्क सॉन्ग खेले फिर ड्रॉप कर दिया, फोर्सफुली खुद को खिलवा रहा, ड्रॉप कर दिया, फोर्सफुली खुद को खिलवा रहे हैं। हाँ, सिल्क सॉन्ग हाई पाइप में बहुत लोगों ने उठाई थी, बट उन्होंने फिर ड्रॉप मार दी। बहुत बंदों ने पता है रेजिडेंट इवल 9 के साथ भी सेम काम किया है, एक आरी गेम नहीं खेली भाई ना। ये भी नहीं हुआ कि चल भाई मैं RE2 और RE4 रीमेक खेल लेता हूँ, कि एटलीस्ट लियोन का वो गेम खेल लेता हूँ, सीधे RE9 पे आ गए भाई। तुम्हें ना लियोन की बैक स्टोरी पता, ना तुम्हें उसका कैरेक्टर के बारे में पता, भाई कहाँ वो लेवल का मजा आएगा। खेलना जब नहीं आता फिर मत कहो भाई तुम्हें अगर गेम नहीं खेलना आता ना, ड्रॉप मार दो भाई। मेरे को तो वो वूचैंग से लेसन मिल गया भाई, गेम खेल नहीं पा रहे हो, खेलो ही मत। रेजिडेंट में एटलीस्ट प्ले RE4 टू खेल भाई। और बहुतों ने तो केसीडी के साथ भी सेव किया है, बहुत लोग तो सीधे केसीडी 2 में एंट्री मार ली है भाई। मैंने पूछा बंदों से कि भाई तुमने केसीडी 2 में डायरेक्ट क्यों एंट्री ले ली, तो उसने बोला कि किसी यूट्यूबर ने बोला था कि ज़रूरी नहीं है फर्स्ट गेम खेलना, दोनों की फर्स्ट गेम की स्टोरी वो लोग रिकैप में बताते हैं। अरे वो रिकैप में झाड़ भरा और स्टोरी बताते हैं भाई वो लोग। तुम्हें प्रॉपर स्टोरी अगर तुम्हें जाननी है तो तुम्हें गेम खेलने पड़ेंगे। मैं केसीडी 2 में कितने रेफरेंस थे फर्स्ट गेम की साइड क्वेस्ट के। मैं फर्स्ट गेम में जिस एग्जीक्यूशनर की मैंने हेल्प करी थी, सेकंड गेम में मैं उस एग्जीक्यूशनर से मिला जिसका मैंने काम खराब किया था। फर्स्ट गेम में हैंड्स को मैंने बैंडेज से बचाया था, सेकंड गेम में ये चीज़ मेंशन होती है। बंदे भाई फर्स्ट गेम जब मिस करते हैं ना ऑन पर्पस, मतलब उनका ऑप्शन है फिर भी, तो भाई वो उनका खुद का एक्सपीरियंस बुरा होता ही है। प्रॉपर एक्सपीरियंस में केसीडी 1, वही तो मैं कह रहा हूँ, केसीडी 1 जब तक तुम खेलोगे नहीं तो वहाँ प्रॉपर एक्सपीरियंस है ही नहीं वो। फिर टू अंडरस्टैंड द लोर मच बेटर यू हैव टू प्ले दैट। वही ये लोग भाई बंदों को पता नहीं कौन यूट्यूबर इन्हें बता देता है भाई फर्स्ट गेम की नीड नहीं है वो। भाई इस गेम में इतने रेफरेंस थे ना फर्स्ट गेम के, अगर मैं नहीं खेलता ना मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता क्या क्या बोल रहे हैं लोग। रैडजिक के बारे में भाई हम लोग को इस गेम में पहले से ही पता है कि वो हेनरी के क्या बोलते हैं एक्चुअल फादर है। अब जिसने मान लो सेकंड गेम डायरेक्ट खेल लिया ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये हेनरी तो बोल रहा है रैडजिक हमारा फादर है, लेकिन फिर बोल रहा है कि माय माँ एंड पापा पास्ड अवे। वो भाई वो बंदा समझ ही नहीं पाएगा कि मार्टिन कौन था, उसका स्टेप फादर कौन था। सब बुरे कर रहे हैं पर ये जॉर्ज गेमिंग पीक पर भाई। जॉर्ज गेमिंग तो डिफरेंट लेवल बंदा है भाई, ये बंदा पूरा डिफरेंट लेवल ही है। ही इज डिफरेंट भाई। उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब उतना कॉन्फिडेंस के साथ कंटेंट बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। मतलब बंदा पूरा खुल के बनाता है भाई, कोई कुछ होल्ड बैक नहीं करता, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है अच्छे से।
भाई तुम्हें वैसे क्या लगता है जो इस बीच गेम्स आए, क्या होता है? ब्लैक फ्लैग रीसिंग, हेलो रीमेक, डूम डूम तो तुम्हें मैंने पता है, तुम्हारा रिव्यू मैंने देखा, तुम्हें पसंद है। तुम्हें क्या हेलो रीमेक का क्या सीन लगा? तुम्हें लगा ये गेम सही है? इसमें मैंने देखा कुछ इन लोगों ने बेकार कर दिया है। जॉश है, जॉश, यस जॉश है, जॉश। उसकी वीडियो चाहो तो पूरे दिन भी अच्छी हो जाती। यस यस, बंदा एक्सप्रेसिव बंदा है भाई, मतलब वो उसे ये नहीं लगता भाई कि वो फनी बनेगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये वो एक्सप्रेसिव है बहुत। मेरे को तो पता है ब्लैक फ्लैग रीसिंग खेलने का मन है बहुत, बट उसमें ज़्यादा बग्स हैं यार, उस गेम में भी परफेक्ट गेम नहीं है। बट आई थिंक जितने झाटू यूबीसॉफ्ट ने गेम्स बनाए हैं नए वाले, उनसे तो बेटर ही है। हेलो रीमेक देखो, इट वाज क्रैश ग्रैब एंड डेस्परेट मूव टू मेक गेम आउट इट एंड सेम टू रीसिंक, दे नेवर नीडेड अ रीमेक। हाँ ऐसा रीसिंक, एक्चुअल में जिस गेम को रीमेक चाहिए ना, वो है असैसिन्स क्रीड 1, पहला वाला एकदम जियो से पहले का गेम। और भाई उसको रीमेक नहीं मिला। अगर अब ये चल गया है तो भाई शायद उसको भी दे ही दें। ये प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों ने रिव्यू डाले हैं, क्या क्या कमी है उससे फिक्स करो गेम्स। भाई ये हेलो में पता नहीं कोई फीमेल कैरेक्टर डाल दिया इन लोगों ने, जो बेकार सी है, मैंने सुना हेलो इवॉल्व में। मैं भी सोच रहा था हेलो खेलने की भाई, कि एज अ प्ले स्टेशन यूज़र पहली बार। बाकी एक चीज़ अच्छी हुई कि ब्लैक ऑप्स 1 एंड 2 आ गए PS5 पे भाई। मेरे को ब्लैक ऑप्स 1 खेलना था बहुत सालों से, वो नहीं खेला है मैंने। 2 तो खेल रखा है, 1 का भी खेलूंगा। गेम्स लाइक ओल्ड आरी सीरीज नीड्स रीमेक, क्योंकि वो आउटडेटेड फील है मॉडर्न गेम्स के लिए। हाँ तो इन लोगों ने इसीलिए सबका बना भी रखा है कि करके। अभी ये लोग कोड वेरोनिक का बना रहे, ये लोग धीमे धीमे RE1 RE5 सबका बनाएंगे। रेसिंग एंड हेलो स्टिल प्लेबल। हाँ मतलब एसी ब्लैक फ्लैग आउटडेटेड गेम तो नहीं है भाई, इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग आउटडेटेड गेम। एसी ब्लैक फ्लैग का इन लोगों ने गेम प्ले सुधार दिया, कुछ क्वेस्ट वेस्ट डाल दी, और इन लोगों ने भाई वो CGI ट्रेलर में जैसा गेम पहले दिखता था वैसा ही गेम इन जनरल दिखता है। जो पहले CGI ट्रेलर ये लोग बनाते थे उसकी तरह एक्चुअल में यहाँ दिख रहा। कैपकॉम का अच्छा एडिशन लगा के झांप सॉफ्ट सुधरते नहीं बस। यूबीसॉफ्ट ने पता है रीमेक के लिए क्यों चले गए, इनको इनको इनका भी यही हो गया है ना कि इन्हें पता है कि इनसे अब नए गेम नहीं बन रहे हैं, लोग हेट ही कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो ऑलरेडी लव्ड प्रोडक्ट है उसे हम बेटर कर देते हैं। नया फॉर्मूला जो है ना, वो डेव्स हेट, गेमर्स हेट ही कर रहे हैं उसको। तुम लॉफी देख लो भाई, वो गॉड ऑफ वॉर लॉफी, इतना बढ़िया गेम प्ले उस गेम का, वो गेम प्ले दिख रहा है अच्छा है उसका। भाई मैंने मजाक मजाक में मैंने भी उसका ट्रोल किया है उसे, बट बहुत लोग सीरियस हैं भाई। उस गेम का इतना अच्छा गेम प्ले है, उसकी लोर इतनी बढ़िया होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो लड़की कोई रैंडम लड़की, वो क्रेटोस की वाइफ है लिटरली। इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में। फिर भी भाई वो गेम है भाई, गॉड ऑफ वॉर गोज फीमेल, ये वो शुरू भाई। अब एक तरफ तो लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस गेम प्ले चाहिए अच्छा। फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाई इसको गॉड ऑफ वॉर का नाम मत दो भाई, इसमें फीमेल है। भाई एक तरफ के रह लो ना, गेम प्ले अच्छी है पर पता नहीं उसको बेकार में हेट मिल रहा, बस इसलिए मिल रहा है क्योंकि फीमेल है। और हेट भी वो लोग दे रहे हैं जिन्हें स्टोरी से मतलब नहीं है भाई, जो खुद ही बोलते हैं कि भाई मैं तो गेम प्ले के लिए गेम खेलता हूँ, स्टोरी के लिए मैं मूवी या पिक्चर देख लूँगा। भाई तो फिर खेलो ना, फिर काहे वो कर रहे हो उतना। जिसको स्टोरी से वैसे मतलब है ना, वो भी लॉफी को हेट तो नहीं करेगा, क्योंकि लॉफी की स्टोरी भाई इंपॉर्टेंट है यार गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स में, अच्छी स्टोरी होगी। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट बेस्ट गेम होगी भाई, डे वन ही खरीद के खेलूंगा फुल प्राइस पे, बट जितना उसको पहले से ही लोगों ने कर दिया ना, बेकार ही कर रहे। और क्रेटोस ऐसा तो है नहीं कि वो लोग हटा दिए परमानेंट भाई, आ रहा है अभी भी, वो रीमेक्स में भी आएगा और आने वाले गेम में भी। और भाई 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हम लोग का यैपिंग चल रही भाई। भाई जस्ट यैपिंग स्ट्रीम बन गई मेरी। मैं हेट नहीं करता फीमेल देखूँ लूँ, आई ऑलवेज लाइक फीमेल प्रोटैगनिस्ट या पोटेंशियल से लोग कुछ नया करें। हाँ नया करने वाला सीन है,
फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी गेम्स में अच्छे हैं भाई। अपना भाई विचर 4 आ रहा है, उसमें भी सीरी रहेगी भाई। सो वहाँ तो भूल ही जाओ कि भाई गैराल्ट खेलने मिलेगा। गैराल्ट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक साइड कैरेक्टर होगा अगर हुआ भी तो ऐसे गेम में। सीरी है उस गेम में मेन प्रोटैगनिस्ट। GTA 6 में इन लोगों ने फीमेल डाल दी भाई, मेल और फीमेल दोनों है। तो ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन गेमिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग भाई, इसमें कोई वो नहीं है कि नई चीज़ है। बस भाई बेकार नहीं होना चाहिए भाई। मैं जब रहूँगा तब चलती है ऐपिंग। हाँ वो तो है ही यार, हम लोग की ऐपिंग बहुत चलती। हम लोग या तो किसी और की चैट पे बात करते हैं। आज मैं ही स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रीम पे बात हो रही। अच्छा है यार, वैसे बातें करने में मज़ा आ रहा है। केसीडी में अगर फीमेल प्रोडक्ट देखो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नया करो यही चाहिए। अरे उन लोगों ने वो डीएलसी थी ना केसीडी 1 की, क्या बोलते हैं वो, वुमेन स्लॉट, वो थेरेसा की डीएलसी, उसमें हम लोग थे तो वुमेन ही थे उसमें भी। वो लेकिन कोई वो नहीं था उसमें कि बेकार है बहुत बाबू। वो बेसिकली वो थेरेसा की स्टोरी दिखा रहे थे उस डीएलसी में कि स्केलेट्स पे अटैक होने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी, उस स्केलेट्स के अटैक ने उसका क्या नुकसान कर दिया। मैंने खेली नहीं है, नहीं खेली है यार। केसीडी 1 की डीएलसीज खेलनी चाहिए भाई तुम्हें। आई वुड से केसीडी 1 की डीएलसीज जो है ना उनकी स्टोरी बहुत अच्छी है अभी भी। मतलब मैंने देखा बहुत लोगों ने नहीं खेली, फ्यूरी ने नहीं खेली, चैलेंजर ने नहीं खेली, बियॉन्ड ने नहीं खेली, वैभव भाई तक ने नहीं खेली। सब ने एपिक से खेल के गलती कर दी भाई। फिर से मैं डाउनलोड करूंगा गेम। सब ने ना एपिक से खेल के गलती कर दी। फ्यूरी का वास्तव से था डीएलसी बट फिर भी पता नहीं क्यों उसने स्किप कर दी। मैं तो उसको बोला था खेल लो मजा आएगा भाई। मतलब एक्चुअली मेरे को जितना पता है ना, ज़्यादातर लोगों ने बस इसीलिए स्किप किए क्योंकि वो एपिक पे उन्होंने बेस गेम ही दिया था। बट मैं तो कहूँगा भाई एक सेव फाइल रखो अपने पास और भाई सारी डीएलसीज खेलो, सारी वर्थ इट है। फ्रॉम द एशेस थोड़ी सी क्या बोलते हैं अजीब है कि उसमें तुम्हें 100 के ग्रोशन कलेक्ट करने पड़ेंगे पहले, बट बाकी सारी डीएलसी भाई बहुत अच्छी हैं। मेरे पास डीएलसी था पर मन नहीं था मेन गेम खत्म करके बर्नआउट हो तो उस टाइम खेल लेता। ओके ओके भाई। केसीडी की 1 की एक चीज़ ये भी दिक्कत है ना कि वो गेम कंप्लीट होने के बाद तुम पोस्ट गेम एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते, तो तुम्हें वो डीएलसीज वगैरह पहले ही करनी पड़ेंगी विद इन द मेन गेम। इस गेम का क्या है, इन लोगों ने पोस्ट गेम एक्सप्लोरेशन दे दिया तुम्हें। उस गेम में उन लोगों ने नैरेटिव सेट करके रखा था, फर्स्ट गेम एंड है, वहाँ से सेकंड गेम चालू है। बट भाई इट्स द एंड ऑफ हेनरीज जर्नी नाउ। चलो मैं जाता हूँ सोने। गुड नाइट भाई, हो गया हम लोग की ऐपिंग। बाय बाय।